Samriddhi. Namaskar, Swagatam. We would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Society, Kolkata, in AYUSH Samriddhi International Webinar Series. Thanks to respected Dr. Kousthubha Upadhyaya today. Thank you, sir. Thank you for joining within very short notice. I would like to communicate my sincere thanks and regards to all the speakers and all the experts of the dais in audience, because in our webinar series, experts are on the both the side. So thank you, gratitude again. I would like to request Professor Vishnu Prasad Sharma ji for his formal welcome address. Vishnu Prasad Sharma ji is ex-principal, Government Ayurvedic College, Guwahati, and then Vishnu Prasad V.K. Agnihotri sir, ex-principal, Haridwar Ayurvedic Medical College. So welcome Vishnu Prasad Sharma ji for your formal welcome address. Okay, namaskar. Good morning to everybody. Respected, distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this morning webinar on Best Initiative for Quality of ASU Drugs. Most important subject today we have. In this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome Dr. Kousthubha Upadhyaya, Advisor, Ayurveda, Ministry of AYUSH, Government of India, New Delhi. Namaskar, sir, Namaskar. and welcome you to this morning. Namaskar, sir. Next, I want to welcome Dr. J.P. Singh, partner, Sri Dhanantari Herbal, President, Punjab Ayurvedic Drug Manufacturer Association from Punjab. Namaskar, sir, and welcome you to this morning webinar. Next, I want to welcome Dr. D. Ramanathan, CEO, Sitaram Ayurveda and Hospital, General Secretary, Amoy, Thrissur. Namaskar, sir, and welcome you to this morning webinar. Next, I want to welcome, namaskar, sir. Next, I want to welcome Mr. Ravi Srivastava, CEO, ACE Botanica, Industrial Consultant, New Delhi. Namaskar, sir. Namaskar, sir. Namaskar. Welcome you to this morning webinar. Next, I want to welcome Dr. Naveen Kumar Garg, Technical Head and Assessor, AYUSH Smart Scheme, IR Class System and Solution, Private Limited, Mumbai. Namaskar, sir, and welcome you to this morning webinar. Next, I want to welcome Mr. Rajesh Sethiya, President, AYUSH Nirmata Sangha, Indore. Namaskar, sir, and welcome you to this morning webinar. Once again, I welcome all the eminent speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this morning important webinar on Best Initiative for Quality of ASU Drugs. Namaskar, over to Pawanji. Thank you. Thank you, sir, for brief preamble. I would like to request Professor V.K. Agnihotri, sir, ex-principal, Haridwar Ayurvedic College. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you, Professor Pawan Sharmaji, and our respect and regards to all the big dignitaries and distinguished guest speakers of today, this morning webinar. You know that we are already late, and everybody's time is very important, especially our Kousthubha sir. So I would simply like to say that we are all the quality lovers. We love quality in our every walk of life, may it be food, clothing, thinking, working, etc., etc. When it comes a matter of quality of the ASU drugs, it itself a very important sector where we can think of it, and big guys are here. They will all throw light that what steps may be taken to maintain the quality and to improve the quality as such, because increasing the quality of drugs, it itself will improve the quality of health of every individual
whosoever is going to use it. So our platform is full of galaxy of all these big guys, and we are fortunate enough that it's a great day today, that every person is full of knowledge and experience, and we are going to listen and be benefited. With these initial words, I welcome again, especially Professor Kousthubha sir, and all the great manufacturers, scientists, administrators, and also the experienced person related with the theme of the quality of drug. Thank you so much. Over to Pawan Sharma. Namaskar. Thank you very much, sir. Thank you very much. I would like to welcome Dr. Naveen Gupta from UK, London. Though it is early morning in London, but he has joined. Dr. Rampal Somani ji, very senior. Dr. Lakshmikant Dwivedi ji, from welcome, sir. Welcome all. I would like to introduce myself. I did my MD in 89 in Rasastra and Bhaisaj Kalpana from Jamnagar, and then joined Imami. And in the meantime, I did my education academy also for 10, 12 years. And then again in Imami, retired as vice president. So R&D, manufacturing, quality control, standardization, SOPs, etc. definitely was my curriculum for that. So without wasting much time, I would like to request Dr. Kousthubha Upadhyaya sir for his keynote address. Welcome, sir. नमस्कार सर. नमस्कार Namaste. डॉक्टर पवन जी, डॉक्टर अग्निहोत्री जी, डॉक्टर नड्डा जी. Am I audible, sir? Yes, sir. Clear, loud and clear, sir. And Dwivedi ji, Dr. Ramanathan ji, and all other dignitaries who have joined this meeting. I beg my sorry for joining late. Today's topic, the best initiative of quality of AYUSH drugs, is the main issue for which I am working in the Government of India and having full responsibility on this issue. I convey my thank you for inviting me to participate in this meeting. Next slide, please. Quality issue is prima facie very important for all the aspects of life. It is a guarantee given to the consumer towards the declared efficacy and to ensure and possibility of contamination. It results trust and faith in the minds of consumers and builds up brand value to the products. Quality is the key for long-term presence of the products. It is the first and foremost factor in building the consumer satisfaction. Next slide, please. So, is the concept of quality assurance is aligned to AYUSH systems? That is the general query everyone places for us when we come to the field. But quality is the prima facie, it is involved in the very beginning of the Ayurveda world and AYUSH world. It is known by the name Dravya Sampat. Dravya Sampat or quality is the foremost prerequisite for a successful and reliable treatment. It is the basic for survival of the system and also for statutory requirement under Drug and Cosmetic Act. Standard process and procedures involved in manufacturing is well explained in the ancient textbooks of Ayurveda. ASU's guidelines of drug standardization under the context of Dravya Pariksha happens to be most comprehensive and one of the ancient sets of guidelines on standardization. Next slide. So what are the ASU's guidelines on standardization? Presence of natural identity features, presence of original properties like Rasaguna, Virya, Ipaka, Prabhava in optimum level,
place of origin of plant material, the season of collection, the mode of collection, the method of storage, and the processing given to the drug. All these are part and parcel of the ARES guidelines, which are followed from time immemorial. And we are only just framing it in the legal framework. And for us, GMP is the legal instrument to ensure quality of AYUSH products and good manufacturing practices for Ayurveda, Siddha, Unani is prescribed under Schedule T of the Drug and Cosmetic Rule. It is a compulsory provision under Rule 157 of Drug and Cosmetic Rule. Certificate issued by the SLAs for every 5 years after inspection by drug inspector, and it is to be renewed once in every 5 years after inspection. Next slide. So what are the aims of good manufacturing practices? Totally, it is the quality. So I will just place out what are the rules which places good manufacturing practices, aims and objectives. Raw materials used in the manufacture of drugs should be authentic. They are of the prescribed quality and they should be free from contamination. Manufacturing process has been prescribed to maintain standards. Adequate quality control measures are to be adopted. Next slide. Next slide, please. Isn't this a quality control section? I think you have missed one slide. Just go back. Dr. Snehal Aldar, please below your hand, down your hand. The manufactured drug which is released for sale should be of acceptable quality. To achieve the objectives listed above, every licensee shall evolve the methodology and procedures for following the prescribed process of manufacturing of drugs, while it should be documented as a manual and should be kept for reference for inspection. These are all the criteria and aims and objectives of GMP. Next slide, please. So what should be the quality control section? Either it should be in-house facility, or if the manufacturers are small-scale industry and they are not capable of maintaining their in-house quality control lab, they can use the government-approved laboratory. The test shall be as per the pharmacopoeias of the particular systems, and they should be a pharmacopoeia standard. If tests are not prescribed in the pharmacopoeia, the test performed can be according to manufacturer specification, in-house specification, and other information available in public domain. The quality control section shall verify all the raw materials, monitor in-process quality checks, and control the quality of finished products, and before releasing to the finished products to the stores or warehouse. Preferably for such quality control, there will be a proper records has to be maintained. Next slide, please. Yes, sir. And I'm not getting full screen. Okay. And these are all the facilities which should be maintained under quality control section. There should be minimum 150 square feet area for quality control section. For identification of raw materials, reference books, reference samples should be maintained. Manufacturing records should be maintained for various processes. Verify the finished products, controlled samples of finished products of each batch will be kept till the expiry date for the product for 3 years. Next slide. So to supervise and monitor adequately the condition of raw material under which raw materials are stored, semi-finished products are stored, and finished products are stored, there should be proper monitoring and supervising. And
keeping record is very much essential in establishing shelf life and storage requirements of drugs. Manufacturers who are manufacturing patent and proprietary ASU medicines shall provide their own specification and control references in respect of such formulated drugs. So these are the facilities which are to be under quality control section. Next slide, please. And then record of specific method of bhavana, mardana, puta, and all these things for associates has to be maintained. Standards for identity, purity, strength, as given in the respective pharmacopoeia of a particular system shall be maintained and should be complied with. All raw materials will be monitored for fungal, bacterial contamination and with a view to minimize such contamination. Next slide. So, quality control section will have minimum of 3 experts. One is expert of the particular system of medicine. If it is Ayurveda, company is manufacturing Ayurveda medicines, there should be Ayurveda expert. If it is Siddha, Siddha expert should be there. If Unani medicine is manufactured, Unani expert should be there. Then one chemist with having at least bachelor degree in science of pharmacy or pharmacy in Ayurveda with the awarded recognized university. Then botanist or pharmacognist of the general stream, botanist stream or pharmacy stream. This is the manpower requirement. Next slide. So machinery and equipment, how it has to be placed depending on the size of operation and nature of the products manufactured. Suitable equipment, either manual or semi-automatic, should be used, should be placed and are for use of process of manufacturing of such as crushing, grinding, powdering, boiling, mashing, burning, roasting, etc. There should be suitable equipment and machinery. Adequate space should be maintained between 2 machines and row of machines. Proper installation and maintenance has to be ensured. Proper SOP for cleaning, maintaining, and performance of every machine should be laid down. Next slide. So actually, raw material is the basic for the quality control of the finished product. But this aspect is very much neglected. Unfortunately, we don't have raw material regulation also. We don't have which raw material is coming from which place, how it is stored, how long it is collected, and how long it was in the storage. Those information we are not having. Because of that also, the quality of finished product is suffering. So government is actually seeing how to regulate these raw materials and how to bring quality raw materials for the industry. We are seriously working on it. All the raw materials shall be sampled and got tested either by in-house lab or by the laboratories approved by the government, like DTLs. And before using, it should be verified properly and sample has to be tested. The rejected raw material should be removed from the store and other should be kept in separate room. Procedure of first in and first out should be adopted for raw materials wherever necessary. Records of receipt, testing and approval or rejection and use of raw materials should be properly maintained. These are all the requirements of raw materials, and this is the basic aspect for our finished products. Then maintenance of record, batch-wise manufacturing records has to be maintained, and tests conducted during stages of like stage, color, physical characters, chemical test, pharmacopoeia test, everything has to be recorded. And also for the finished product, records should be duly signed by the production and quality control personnel respectively. Next slide. Then comes the batch manufacturing records. Details of transfer of manufactured drug to the finished product store, including dates and quantity and of drugs transferred, along with the record of testing and of the finished products, if any, and packaging records shall be maintained. Only after the manufactured drugs have been verified, the accepted quality shall be allowed to be cleared for the sale. It should be essential to maintain the record of the manpower, machine, and equipment used to keep the process of record of various shodhana, bhavana, etc., and specific grindings in terms of internal use. These are related to batch manufacturing records.
Next is distribution records. Records of the sale and distribution of each batch of Ayurveda medicine, Ayurveda, Siddha, Unani medicine shall be maintained in order to facilitate prompt and complete recall of the batch if necessary. Because once NXQ has been declared, the manufacturer has to recall all the supply which was distributed to the market. So for that, this record is very much important. And drug inspectors, while doing the inspection for checking the GMP, they have to ensure this record is maintained properly or not. Then duration of record keeping should be the date of expiry of the batch. Then certain category of Ayurveda, Siddha, Unani medicines like Bhasma, Parpati, for that there is separate guidelines is also there, and expiry date in contrast their efficacy increases with passing of time. Hence, records need to be maintained up to 5 years of exhausting of stock of these Rasaushadhas. Next slide. Then record of market complaints. Maintain a register to record all reports of market complaints received regarding the products sold in the market. Then manufacturer shall enter all the data received from the market complaint, investigation carried out by the manufacturers regarding the complaints, as well as the corrective action initiated to prevent recurrence of such complaints. Everything has to be recorded properly. Once in a period of 6 months, the manufacturer shall submit the record of such complaints to the licensing authority. Next slide. So this GMP is the main instrument through which quality products of AYUSH is ensured in the AYUSH products. And WHO COPP is the next step for quality assurance. And now for all industries, we are encouraging them to come up with the WHO COPP, because quality concern is the main reason where consumers are apprehensive of using the Ayurveda products. So it is the responsibility of our industry, and we have to come forward to acquire better quality standards. Now also GMP provisions are again reviewed. There is a committee under ASU tab, and I am chairing the committee, and JP Singh also is a member of that committee. And we are looking on that whether there is any need to review and improve the existing GMP under the Drug and Cosmetic Act. So we are in the process of doing that. And in the future, this will be the foremost requirement for survival and spread of our industry across the world. So further, there are certain issues which has to be discussed here. There are different conflicts in various pharmacopoeia. Suppose a drug is ashwagandha. Ashwagandha in Ayurveda pharmacopoeia and Siddha pharmacopoeia and Unani pharmacopoeia. Drug is the same, but standard systems are differed. So for this, government is taking over a project of one herb, one standard. We are doing that, and also Pharmacopoeia Committee in the last meeting has requested all the industry members to submit whatever the incongruencies or insufficiencies in the existing pharmacopoeia that is noticed by the industry to PCIMH, so that will be relooked and pharmacopoeia will be updated dynamically. This is one of the issues. One more regarding raw materials. There are certain raw materials which are already red listed. Unless you have the cultivation certificate, you are not supposed to use in the manufacturing process. So, and one of the other issue is cultivated raw materials, whether they are exempted from the Biodiversity Act, and whether industry can cultivate and exploit, especially bark and roots. It is very difficult. Even if you grow tree on your own land, you are not having permission to exploit it. So all these issues have been marked to the ministry, and we are working on it. And in coming years, we will do with the ease of doing business. We will review all the existing rules and laws, and we will facilitate industry to come up with good quality ASU products. And I think future is ours.
And Honorable Prime Minister has already given the mandate that by the Amritkal, another 25 years, the ASU product should reach out to every nook and corner of the world. That is the mandate given to us, and responsibilities not only of the government authorities, it's also for the industry and Ayurveda fraternity as a whole. And I am hopeful that we together work in this direction and we will able to achieve this target in another 25 years. Thank you all. Thank you for giving this opportunity. Thank you once again. Namaste. Sir, thank you very much. This platform is yours. Definitely, thank you. Thank you for guidance to all manufacturers. We are fortunate today, sir, that you have joined. And luckily, we have 4 associations here. One from Dr. D. Ramanathan, sir, Chairman of Sitaram Ayurveda. And then Rajesh Sethiya ji from MP AYUSH Nirmata Sangh. Then JP Singh ji from our Punjab AYUSH Nirmata Sangh. And Naveen ji and all industrial experts are here. So without wasting much time, I would like to communicate my sincere regards to you, and then would like to invite Dr. D. Ramanathan ji. Dr. D. Ramanathan ji, welcome. Am I audible to you, sir? Dr. D. Ramanathan. Yes, sir. 1 minute. I want to share my video. Welcome. 1 minute, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Kousthubha, your beautiful presentation. Thank you very much for your nice presentation. Thank you. कोई प्रश्न पूछने का है सर, पूछ सकते हैं सर? कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर विरूपाक्ष। बाद में अभी स्पीकर्स हो जाए, स्पीकर्स के बाद आप कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर विरूपाक्ष गुप्ता बोल रहा हूँ। Please, speakers के बाद question answer session will definitely be there. Sir is there, our guide, and he will guide us. Okay, sir. Thank you. Please keep all mics mute. ನೀರು ಕೊಡು. Your presentation is visible, sir. If it is not going for slide, so we can continue in this mode also, sir. Okay, sir. Sir, I am audible now? Yes, loud and clear, sir. Oh, Welcome. sorry for the 5 minutes. So I first of all thanks for your taking initiative, the quality of the ASU drug. You see that the Ayurveda mentioned that Bahukalpam, Bahugunam, Sambannam, Yogyam Aushadam. Our Kousthubha covered almost the Sambannam area is covered almost all the area beautifully. But we need our subject is Bahukalpam. That is, we have formulated the different forms. That is, generic products and 3A and 3H. The 3A mean, first you see that Aswas and Arishas, Gulyas, Churnas, and Lehyas. A number of the 8 or 9 type of the varieties of the formulation, the Bahukalpa. This is a main need for the Ayurvedic physician, future for the treatment-oriented area. So that area we will discuss now. Then Bahuguna, that is another aspect. That is, each formulation is mentioned. Suppose you are going to Deshamularisha or Chavanaprash, they are mentioned Bahuguna. More than 12 to 13 type of the Bahugunas indications are mentioned. So that is a beauty of the Ayurveda. But compared to the modern aspects, this aspect, that is, as a physician, he is given the medicine that is the Bahuguna, the patient body structure
what he need for Chavanaprasha, where you are prescribed, that where indication Bahuna is prescribed. That is a beauty of the Ayurveda. Next one is Sampanna. Sampanna means Ayurveda that is almost 80% of area our Kousthubha cover that issue and can be the use season avastha of patient. That is a aushadha in Ayurveda best concepts are. So the backbone of Ayurvedic therapy is in formulation due to the therapeutic properties, natural and safe. It promotes health and well-being and stronger long-term action. Then why need quality? That is need efficacy, safety, therapeutic benefits, standardization of active ingredient, and finally the consumer confidence. As I am not an Ayurveda physician, not a manufacturer. What is my job? The government job. That is our Kousthubha, the drug policy mentioned that the main job, the drug policy regulation for the consumer health, consumer confidence. That is a need now. That is the reason why the Ayurveda now is come to the complete modern parameters. So, then the quality of Ayurveda plants, authenticity or purity, sourcing and cultivation, Kousthubha already mentioned that, storage of shelf life, and quality checking. You see that Ayurvedic Pharmacopoeia of India, that is publication, the single has part 1 and part 2 is a formulation. That so far the government, now we are available in the more than 9 volume. That first volume 80 monograph, second to 78, 300, 468, 592 monograph, that is 601, and volume 7 minerals and metal 21. Volume 8 is a hydraulic and water extract 60, and volume 9 is a 45 published single health quality is already published, the government of India, our test. And you, these are pharmacopoeia, see, this is also we can get it now. Because everything is available now. API, Ayurveda formula, how many herbs are there, how many shrubs are mentioned, how many trees are mentioned, and climb base are there, total 77 APA standards already published, have habitual cultivar classification. For 27 herbs, 13 shrubs, 20 trees, 67 number. And volume 3, 32 herbs, 19 herbs, 25 trees, 3 small trees, 7 climb base, and 7 others, 93. Volume 4, 15 herbs, 12 herbs, 23 herbs, and 6 climb base and 6 others, and total 60. And volume 6, 37 herbs, 90 herbs, 16 trees, small trees, climb base 5, others 5, 90. So you see that 174 herbs, 96 herbs you are getting, 123 trees, 13 small trees, the 36 climb base, 32 others, and 463 total items of Ayurvedic pharmacopoeia. The total health classification in available. All the quality aspects we are available now. Then you go to the APA part 2. That is the formulation. The 202 number of monograph also. The 202, the Ayurvedic formulation, the part 2 is available. And Hindi edition also more than 101 is available now. And Ayurvedic Formulary of India, that is 102nd part, 2003, 4,400 formulation monograph is available. And APA 3, 191,
API 3 bilingual 350 is available now. And supporting pharmacopoeia publication also, API volume 3, 80 monographs and 90, that is TLC and microscopy and microscopy allies also we are getting already published, Government of India. So content of the single head monograph, you can use the name of the plant, genomes, description, macroscopic, microscopic powder, identity, purity and strength, constitution, property and action, Jasa, Guna, Virya, Vibhaga, Prabhava. Everything's available now in the market. But unfortunately, we can properly utilize. That is our job, because the government's already published and we have enough important formulation, therapeutic use and dosage, everything there. Then how can we utilize this publication or our better improvement of the industry, not only industry, Ayurvedic system? So more number of my suggestion, Kousthubha, more number of polyherbulation formulation are in AFI. Standards on each polyherbulation has to be done. The formulation, the minimum number of raw material has to be formulated, has to be standardized. And other initiative put forward, inclusion of extra pharmacopoeial drugs of API. Why we are facing the problem now, I think our this policy department initiative, that very much initiative, we are only 58 texts already included, 58 books of the it is the schedule. Yes, schedule 1 is only included. We need at least 160 or 70 books. We need to inclusion of the pharmacopoeia, extra pharmacopoeia. That is also we need in the more classifical drugs is available in the different tests. That also we can publish for the manufacturer, for the public, for the health. The awareness of cultivation higher has all over India. Sir, we have 2000, the National Medicine Plan Board formed. More than 35 states, we have State Medicine Plan Board, and all the Union Territory also State Medicine Plan Board. Then due to after the 23 years of 2000, and now is the 23 years of the service of the and continuous our work of the National Medicine Plan Board and AYUSH and State Medicine Plan Board. Awareness is fantastic, sir. But we are the main problem of the Ayurveda herbs on the concentration of the herbs. For example, sir, Ashoka. How many Ashoka is required for the Ashoka bar? In my experience, you cultivate at least 5 lakhs of Ashoka tree in different shade or 10348. At least you are concentrated 50 or 100 acre Ashoka tree and collected after 80 years. We can save the one side only, don't cut a whole bark, and cambium protection. Only one side you cut it, you get it 15 natural. After dry, you will get it 5 kilo of the herbs. So the 5 kilo herbs, you can at least per year, we can need only 5 lakhs or 1 lakhs of the herbs, the raw tracks of the after the moisture, the raw one. How many Ashoka is required? Maximum 5 lakhs of the Ashoka trees available in the all over India. Our problem is solved. This type of I already mentioned that more than 365 drugs you can cultivate it. This is the main problem of the Ayurveda industry. The real source, cultivation, collection, and procurement, and raw material standardization. So we need a concentration the drug. What is the success of the coconut board? What is the success of the rubber board? What is the success of the coffee board? These are the reasons, spices board. All the reasons they are very concentrated in that area. But we have done more than 365 drugs, that is state-wise. Which state is the best one for the cultivation? I think this is a quality aspect, that is why I raised this issue. Suppose Ashoka, where is the best one? In my Kerala, this is the best one, Bela Siddha Corphodia. Suppose the best one, Chandana, is Karnataka. That is Villua, is best one in UP. And Pipal is best one in Assam.
that you can concentrate and collect that area, then our maximum 80 to 90% of the sourcing quality raw material, free from heavy metal, free from pesticide, free from all other microbial conditions. Only the problem we are facing from transportation, from that area to the transportation, only we need to address. So that needs that awareness of cultivation. That is my request by the government. Awareness of cultivation. Then our 80% of the problem is solved. Why? What is the need now? The quality of the herb drugs is okay. 80% of the industry and IRES system is problem solved. Why? What is the problem? You go to the Wikipedia anywhere. That is the main problem. That is our plants are heavy metals, pesticide, and that is a situations are going on. Last week, that is known, that is government published, that is parliament, 106 drugs, that is that is Ayurveda, is substandard. I collected from that route from the API, RTI, that is 16 drugs is a raw drug. The 16 drugs, 3 items is a main was lead. One is a cadmium. 6 items as mercury, sir. So this is our need. This avoid from the mercury. Where is our mercury? It's only from the land maybe. And lead from the atmosphere. I don't know what is the reason for the cadmium. So this is free from the awareness of cultivation. The quality must be improved and promote the farmers of cultivation, help them to come forward. Implementation of the proper storage system is government level, cold storage, etc. I request one more thing, sir. That is, I know Ayamodaka now is a season. What happens? We need a cold storage. But unfortunately, otherwise, within the 3 months of without the cold storage, we put in the Ayamodaka, what happened? That is, worms are started from there. So we can continue after the cultivation, we need the cold storage. In Kerala, we don't get any cold storage. So what happened? We are keeping here, we are putting the manufacturing, you tested that ash value is more. So this type of the implementation where you want the cold storage, government start with the provided the cold storage, but now with the number of available cold storage everywhere, especially the food corporation, some area you can provide for the medicine plant for the source for the storage purpose to the industry. So then we can avoid. I think number of the issues are that this is one issue I remove, that is a cold storage, etc. I mentioned these reasons are. The research should be done, the polyherbal formation, in order to reduce ingredients to the minimum. And this is my conclusion, sir. Quality assurance of ASU drug is not an Herculean task, because you see that after the AYUSH department, especially the new government secretary, and after the drugs policy department, especially the Kousthubha, how much time, 24/7, they are working for the Herculean task for the not only the industry, education, research, and publication. Everywhere they are working their condition. Then what is the need now? We need a one umbrella. AYUSH department, research department, education department, industry, Ayurveda department come to one umbrella and discuss, and 5 years a long-stand planning. Then our problem is over regarding the quality measures and science advance. All type of the quality analysis tests are available. So we need our industry also needs the marked stamped raw drug. What happened in the Ayurvedic industry, sir? We want to purchase a raw drug. We can to identify the quality. We can to manufacture. This is but we go to the modern medicine, the stamped quality. That is their herbs. That is chemical forms are available in the market. But our industry, totally everything is Ayurveda industry problem. So now the government is also supported, but that area we can more address. And modern advanced scientific instrument and lab facilities are available. We need more funds, sir. That is Ayurveda industry. You know, the compared to the modern medicine, GP, you can analyze the turnover
and net profit and gross profit compared to the modern medicine is far, far less. So we cannot able to spend any amount to share for any amounts to put that area. So that area we can to address. This is my conclusion, sir. Thank you. Beautiful arrangement, and government had to shake to reduce the analysis cost also. Suppose we can to one project which is required 2,000 rupees per cadmium, mercury, and lead, and other microbial condition, another cost 2,000 rupees per drug. So how to possible? So this area also we can address. Why I am raising the issue? This you want the quality assurance. That is economical way, and quality, quantity, and profitability is also required. Suppose you are going to all the investment is there and no profitability, who will go to the job? So that area can you address, and these facilities to be utilized for sanitation, Ayurvedic herbs and products. Thank you very much. I think a small presentation also. Anything you can ask, I think the JPC is there, is knowledge regarding all the area, especially the Basmas, and although he is a man encyclopedia. Why I request one more issue. You go to the Wikipedia. What happened in the Wikipedia? 170 journals are published. I go to the 170 journal article. It's 60 to 70 journals is support for the Ayurveda, but another 30 to 40 journals is against Ayurveda. You can the 3, 4, 5 journal is that mentioned the pseudoscience. So what our need? That is number of the good journals are there. Industry peoples are definitely job. Number of the good journals are there. How can to include it? That is Wikipedia. More our experience. And now they already mentioned that the journals, our schedule 1 books, that only we can slowly include it. Our matter is international level. This is Chinese medicine doing this job. So that is, we are not questioning that, and a question of the problem of the pseudoscience. It is already science. You don't bother about it. It's 100% science. Otherwise, we got a regular patient and regular report, regular good result also. Why? Because of the action of the product, confidence of the product, science of the product. You not compare any type of this type of the scientific knowledge of the complementary system in the world. Ayurveda is only the science. This type of the health conscious, especially the preventive aspect. So already mentioned that Kousthubha, our future is bright, sky the limit, because our government of India is supporting, AYUSH department is supporting, our business is growing. We need at least a pharmacopoeia. And I'm stopped, JP Singh, you are stopped, you're looking the watch. So I am ready to stop. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. You have highlighted all the aspects, right from pharmacopoeia to the problems. Thank you. Thank you very much, sir. Now I would like to request Dr. JP Singh ji, very senior manufacturer from Punjab, Sri Dhanvantri Laboratory. Kindly unmute yourself, sir. Please unmute yourself. You are muted. Please unmute. Please unmute, sir. प्लीज अनम्यूट सर, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर जेपी सिंह जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए, म्यूट हैं आप।
आप होस्ट की तरफ से अनम्यूट कर सकते हैं। I can ask for unmute, sir. Please unmute. एक बार अनम्यूट करके देखिए सर। नवीन जी बाद में आएंगे सर, सीनियरिटी के हिसाब से ही चल रहे हैं हम सब। नहीं वो आपके बाद आप अनम्यूट कीजिए ना सर, सीक्वेंस वाइज चलने दीजिए ना। नहीं, एक बार अनम्यूट करके 5 मिनट आप बेचक जो भी एक्स टेम्पो है प्लीज अनम्यूट। एक बार अनम्यूट पे बटन दबाइए। Pause is not good for the webinar, sir. Please unmute. I have asked you to unmute, sir. अनम्यूट अगर हाँ बिल्कुल, वेलकम सर। वेलकम सर। अच्छा, एक तो मैं सबसे पहले महामना डॉक्टर पवन शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये एक रो में 837 वाला ये अपना कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वर्चुअल ये जो है इनकी बड़ी मेहनत है एंड ही सर्विंग द सिस्टम वेरी वेल। और इनके जो एसोसिएट्स हैं डॉक्टर विष्णु शर्मा एंड डॉक्टर प्रोफेसर अग्निहोत्री जी, उनको भी मेरी सलाम है। I have heard advisor sahab also and Sitaram ji also. That is very knowledgeable things, and Dr. Ramanathan has worked a lot from API, from AFI and all that he has done, and without this he at XM Pro he has talked on many issues regarding the phases we are. The primary thing which is required is for best initiative for quality. It is the raw drug. And Dr. Ramanathan has spoken about it कि जब तक उत्तम जड़ी बूटियां मेटल और मिनरल नहीं मिलते तब तक दवाई बनेगी। जो बेसिक्स है ना उसके ऊपर तो कोई काम हो नहीं रहा। 1962 के अंदर जो है फार्माकोपिया कमेटी बनी थी और उसके बाद में जितने वॉल्यूम वगैरह सब बताया अपना डॉक्टर रामनाथ जी ने, वो हमने सब सुन लिया, देख लिया है। और ये इकोलॉजिकल चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस और जो और चेंजेस है उसके बाद में ये इसकी रिवीजन हर 5 साल के बाद होनी चाहिए। जो चीजें अभी टेस्ट के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि जो रॉ मटेरियल के जो एनालिटिक टेस्ट अवेलेबल हैं ये डिफर। अभी एडवाइजर साहब बता रहे थे कि यूनानी और होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का एक कर रहे हैं, पर आप ये देखिए ना CSI में कुछ लिखा है, BIS में कुछ और लिखा हुआ है, IP में कुछ और लिखा हुआ है। यानी डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट एनालिटिक रिपोर्ट्स। तो किसके ऊपर बिलीव किया जाए कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है? तो ये इसके मामले में ना समन्वय होना चाहिए और एक ठीक होना चाहिए, एक उस हिसाब से
जो मैन्युफैक्चरर है ना उसकी बड़ी प्रॉब्लम है। मैन्युफैक्चरर को राइट फ्रॉम स्टार्ट से लेके और फिनिश गुड्स तक जो है ना सभी काम उसी को करने पड़ते हैं। वही देखे कि जड़ी बूटी भी अच्छी है, वही देखे क्या कहते हैं, ही वाज टॉकिंग अबाउट रामनाथन जी की 2-2 हजार रुपये पर टेस्ट लगता है, आप हैवी मेटल्स का कराना हो, फिर आपने माइक्रोबियल टेस्ट कराना हो, तो ये सब चीजें जो है ना इसके बारे में ये जब तक आप ये बेस्ट इनिशिएटिव जो है डॉक्टर नवीन जी के बारे में मैंने कहा था, डॉक्टर पवन जी से वो कहीं सीनियर के मुताबिक बोलेंगे। नवीन जी ने बहुत से लोगों को वो आयुष मार्क वगैरह दिया है एंड ही हैज सीन द कंडीशंस ऑफ द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की वहां पे क्या पोजीशन है। अब आप ये देखिए कि ये जो पार्ट टू जो बना एपीआई का, उसके अंदर कहीं पे भी जो वो एसओपी नहीं दी गई है। आप उसके अंदर भावना द्रव्य क्या है, कितनी क्वांटिटी में डालना चाहिए, कितने दिन देना चाहिए, कहीं पे कोई उसके बारे में वर्णन नहीं है। तो जब तक हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं बनता जिसके ऊपर कोई काम होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, वो काम नहीं हुआ है। मार्कर नहीं है हमारे पास, बहुत कम मार्कर है हमारे पास अवेलेबल है। अब मार्कर के बगैर हम कैसे देखेंगे कि इसमें एक्टिव हैं क्या नहीं है। फिर जैसे फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स का भी कोई हमारे पास मार्को ईडीएल लिस्ट बनी हुई है, सरकार ने बनाया हुआ है। सरकार खुद मानती है कि आप जो नाम के अंदर जो परचेजेस करते हैं फॉर क्वालिटेटिव मेडिसिन हम जो है ना पीएससी से खरीदेंगे। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट एडमिट्स, और ये आज से नहीं एडमिट कर रही है, ये पिछले 20 साल से परचेज हो रही है ये गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज वगैरह के लिए। तो उस हिसाब से उस मामले के अंदर काम होना चाहिए कि भाई कैसे अच्छी दवाइयां उपलब्धता, और उसका जो मैंने पहले वेरी बेसिक जो कहा था कि जब तक नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, आपने या पता नहीं किसी ने कहा, जब कॉफी बोर्ड अच्छा काम कर रहा है, जब टी बोर्ड अच्छा काम कर रहा है, तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड क्यों नहीं काम कर रहा है। हमारे पास स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है और भी कई इंस्टीट्यूशन है, उन लोगों की हम हेल्प क्यों नहीं लेते। एक पवन जी, एक ना एक्सट्रैक्ट की इंडस्ट्री है, आजकल ज्यादातर जितने भी हैं वो एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। कौन इतना क्वाथ करे। मेरे अपने यहाँ जो है ना एक ट्राली जो है ना, बड़ी ट्राली जो है, 2 दिन के अंदर जो है क्वाथ का जो बचा होता है उससे उठाया जाता है। नवीन जी देकर गए हैं, उन्होंने ही है वेरी काइंडली विजिटेड आवर इंस्टीट्यूशन। तो अब ये सब चीजों से लोग हटके एक्सट्रैक्ट बना, और एक्सट्रैक्ट उन चीजों के अवेलेबल है जिसका रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। कम से कम जब जिस चीज का रॉ मटेरियल, मुझे भी पता है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, आपको भी पता है रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, पर वही है कि इसके अंदर टैनिन इतना है, इसके अंदर फलाना इतना है, वो आपको उसका कुछ स्टैंडर्ड नहीं। फिर ये कहा जाता है कि जो एक्सट्रैक्ट के लिए ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए यूज करना है, उधर के भाई आप एक स्टैंडर्ड बना दीजिए। आप उसको फोर्टिफाई करना चाहें तो फोर्टिफाई कर लीजिए, आप उसको क्या कहते हैं अपना कम करना चाहते हैं तो उसको उसके हिसाब से कम कर लीजिए। पर बहुत ज्यादातर लोग जो हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री जितनी भी सब बनी हुई हैं, वो कोई भी जो है ना एक्सट्रैक्ट ही सारी यूज करते हैं, ना उनके पास लेबोरेटरी है ना कोई कुछ है। तो ये जो अनटेप क्वालिटी कहाँ से बनेगी जब रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं है, जब हमारे एक्सट्रैक्ट ही अच्छे नहीं है, और घर घर के अंदर जो है वो एक्सट्रैक्शन प्लांट लगे हुए हैं। तो मैं डॉक्टर उपाध्याय जी को कहूंगा, और इस माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी कहूंगा, ये एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री जो है ना इसके लिए करे, और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के ऊपर भी प्रेशर पड़ना चाहिए कि 22-23 साल के अंदर जो है कुछ उसका उभर के जो है ना वो कुछ सामने नहीं आया। अभी तक हमारे पास प्लांटिंग सीडिंग मटेरियल ही नहीं है, जो वेरी बेसिक थिंग जो होती है। कितनी यूनिवर्सिटीज में काम हुआ, कहाँ जो भी हुआ, उनको कोई कोलैबोरेट करके एक क्या कहते हैं कुछ एक कॉन्सेप्ट बने और उसके ऊपर आगे काम हो, नया नया चीजें हो रही है। अभी ये लेबोरेटरी की बात हो रही थी कि लेबोरेटरी टेस्ट जो है, अभी मूसली आई थी मेरे यहाँ, मूसली में जो है ना लेबोरेटरी में पास है, फिजिकली ठीक नहीं है।
तो ये सब चीजें जब तक आप बेसिक को जड़ से पकड़ करके और ऊपर ठीक नहीं करेंगे, ये ठीक है कि क्लीनलीनेस होनी चाहिए, एडिक्वेट स्पेस होनी चाहिए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेटेस्ट मशीनरी होनी चाहिए, ये सब चीजों के लिए अब 10 बाई 10 के कमरे में क्या क्या लगेगा। जीएम के अंदर एडवाइजर साहब ने अपने वो टेबल में बताया था कि भाई आप रूल 157 के अंदर जो जीएमपी का है 10 बाई 10 का है और लेबोरेटरी जो है 10 बाई 15 की है। तो ये सब चीजें जो बेसिक चीजें हैं उस मामले में जब तक ध्यान नहीं किया जाएगा तब तक ये आपका एफर्ट्स जो है इट इज अप्रिशिएबल कि आपने ये क्वालिटेटिव मेडिसिन के लिए आपने इस विषय का आयोजन किया हुआ है, पर इस सब के पीछे जो बेसिक्स जो रूट कॉज जो है जब तक वो ध्यान नहीं करेंगे तब अच्छी दवाइयां मिलनी असंभव है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बड़े सही पॉइंट्स पे दर्शन दिया। मैं कौस्तुभ जी से आखिरी में आंसर चाहूंगा, अभी 2 स्पीकर और हैं तो उनके बाद में आंसर चाहूंगा। मैं 1 मिनट और लूंगा। कोई भी दवाई बनाने के लिए शोधन की जरूरत होती है। भस्म वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है। किसी भी एपीआई एफआई और किसी में क्या कहते हैं वो शोधन के ऊपर कोई नहीं लिखा गया कि शोधन कैसे किया जाए, क्या किया जाए। उसी के मुताबिक वो शोधन का है, परिशिष्ट में लिखा हुआ है और वो जो ग्रंथों में लिखा। आपने अगर कोई नाग भस्म बनानी है तो 3 फुटी से भी नाग भस्म बन जाती है और 60 फुटी से भी नाग भस्म नहीं बनती है। तो ये जो वेरिएशन जो है ना किताबों के अंदर जो 54 बुक्स जो है ये सब जो है ना बड़ा कंफ्यूजिंग, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। हमारी जो ये ठीक है कि हमारे जो विद्वान जो है जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, जो उन्होंने अपना इसके ऊपर मेहनत की है, हम उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। पर जो आज के युग के अंदर जो चीजें जरूरत है, आज के लोगों के लिए जो जरूरत है उसके मुताबिक जब तक हम अपने आप को नहीं ढालेंगे, ये च्यवनप्राश की ये बात है। कुस्तुभ जी को भी पता है, इसका बिस्कुट भी बन रहा है, इसका चॉकलेट भी बन रहा है, इसका क्या कहते हैं और भी सब चीजें, जबकि प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में सारा कुछ लिखा हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में ना आपने सिर के ऊपर हाथ रख लिया है। बहुत बहुत आभार। चलिए आप दोनों के आंसर्स जितने कौस्तुभ जी यदि गाइड कर सकें, कौस्तुभ जी कि वह लास्ट में ही रखें क्वेश्चन आंसर सेशन, प्लीज टेल मी। चाहे अभी कुछ रेस्पॉन्ड करना हो तो कर लूंगा। वेलकम। देखिए फार्माकोपिया का जो इश्यू है ये आजकल का नहीं है। जब से मैं गवर्नमेंट में प्रवेश किया है तब से भी चल रहा है, उसके पहले भी चल रहा है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाना है। जो सबसे लो हैंगिंग है उसको पहले अचीव करना है। इसीलिए हम पहला कदम ये लिखा है, ये शुरू किया है 1 हर 1 स्टैंडर्ड। और रिवीजन ऑफ फार्माकोपिया का भी ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री इनपुट्स है उसके माध्यम से उसको इम्प्रूव करा जाए। और दूसरा जो जेपी सिंह जी ने पॉइंट आउट किया था, अलग अलग किताब जैसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इसका आईसीएमआर का बुक्स में अलग है, आईपी का बुक्स में अलग स्टैंडर्ड्स है। ये सब हमने ये 1 हर 1 स्टैंडर्ड में सभी संस्थाओं को बुला दिया है और सारे जो डाटा अवेलेबल है उसको हार्मोनाइज करने का प्रक्रिया शुरू कर रखा है। ये हो जाएगा। अभी हम इसको टास्क फोर्स के माध्यम से 1 साल 2 साल के अंतर्गत सारे कार्यक्रम जो भी रिवीजन ऑफ फार्माकोपिया है वो होने के लिए कोशिश कर रहा है। सारे एक साथ होगा ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक एक स्टेप आगे बढ़े पॉजिटिवली। फिर हम अभी 2-3 साल 4 साल 5 साल में एक जो हम अभी विजुअलाइज कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उसको मीट कर पाएंगे। लेकिन हमारा कोशिश ये रहना है हम बातें कम करें और एक्शन ज्यादा करें। जो सबसे फॉर एग्जांपल एक मैं सबका इंडस्ट्री मेंबर से एक रिक्वेस्ट करूंगा। सब्स्टिट्यूट के बारे में मैं जब से एडवाइजर पोस्ट में आया हूँ 4-5 सेमिनार मीटिंग इंडस्ट्रीज का रिप्रेजेंटेशन सब हो गया है। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों से चर्चा हुआ है। मैंने इतना ही रिक्वेस्ट किया था, मैंने ये टॉपिक फार्माकोपिया मीटिंग में आते ही रखा था
इसमें ये डिसीजन हुआ है जो भी अवेलेबल रिसर्च इनपुट्स है सब्स्टिट्यूट्स के बारे में या अल्टरनेट मेडिसिनल प्लांट सोर्स के बारे में या आइडेंटिफिकेशन ऑफ मल्टीपल स्पीशीज फॉर वन सिंगल ड्रग, ये सारे इश्यूज हम थोड़ा इनपुट्स इकट्ठा करके प्रॉपरली जो गवर्नमेंट को पेश किया गया तो वो हम कर सकते हैं। तो ये हम थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इसको जो सबसे आसानी चीज है उसको पहले टारगेटेड वे में करें, फिर उसका पूरी करके आगे बढ़े, ये ज्यादा बेटर रहेगा। सारा चीज इकट्ठा ले लिया तो कोई चीज पूरा नहीं हो पाएगा, ये मेरा निवेदन है। एक्सट्रैक्ट के बारे में भी थोड़ा सा निवेदन था, तो एक्सट्रैक्ट के बारे में क्वेश्चन आंसर हम आखिरी में रख लेंगे सर। नहीं, हर्बल एक्सट्रैक्ट के बारे में जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा निवेदन था कि उसको भी लॉ के अंदर लाएं ताकि अच्छी दवाइयां तभी बनेगी ना। ये भी विचार करेंगे हम, अगला फार्माकोपिया कमेटी मीटिंग में इसको, इस विषय को चर्चा करेंगे, इसको रखेंगे। आप भी अपना इश्यू जो है फॉर्मली एक बार रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसी हिसाब से हम उसको आगे ले जाएंगे लॉजिकल कंक्लूजन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं कौस्तुभ जी से आशा करूंगा थोड़ा रुकने के लिए। 3 स्पीकर सर और हैं, मेरे दिमाग में भी 2 क्वेश्चन है। 33 साल इंडस्ट्री से अटैच रहा, राइट फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू मेडिको मार्केटिंग, क्लिनिकल रिसर्च। 2 चीजें बड़ी नई है। एक तो मुझे मालूम पड़ा इन वेबिनार सीरीज में कि हींग अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ, क्विंटलों हिंगवाष्टक चूर्ण बन जाता है और हींग की कोई क्वालिटी पे कहीं भी कुछ रोक नहीं है। इस पे भी हमने एक वेबिनार की थी। और दूसरा एक विराट एरिया आ रहा है, हमारी विजया और आइफेन आयुर्वेद वालों ने डालना बंद कर दी और हेम्प एक नया एरिया आ गया। अब वो हेम्प आयुर्वेदिक है कि हेम्प एलोपैथिक लाइसेंस में है, ये एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है सर। कौस्तुभ सर, हेम्प के बारे में रिसेंटली हमने सारे ड्रग कंट्रोलर से मीट किया हुआ है, चर्चा किया हुआ है, इसके बारे में आमूलाग्र रूप से विचार हो रहा है और आगे 2-4 महीने में एक ढंग का प्रपोजल या ढंग का कुछ प्रस्ताव हम पब्लिक के सामने रखने वाले हैं। जो आपने पॉइंट आउट किया ये सही बात है, जो भी अभी हम सारे स्टेट से जो भी आयुर्वेद का दवा लाइसेंस है उसका सैंपल भी मंगवा रहे हैं, उसका स्टडी कर रहे हैं। हमें अभी तक सैंपल इकट्ठा करने में दिक्कत हो रहा है। 31P के अंदर डायरेक्शन दिया गया है, फिर भी स्टेट्स को सेंसिटाइज करने के लिए मीटिंग भी किया हुआ है, अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली हम देखेंगे, ये तो सेक्टर को नुकसान भी ना हो जाए, जो इसका औषधि गुण है वो लोगों के मिले जरूर, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो, ये हमारा कंसर्न है। इसके बारे में सीरियस से विचार कर रहे हैं। 2-4 महीने में कुछ ना कुछ आएगा, उसमें आपका विरोध भी हो सकता है, वो मैं नहीं कहूंगा, आपका सपोर्टिव रहेगा जो भी है, लेकिन लोक हित में होगा ये तो मैं जरूर बता सकता हूँ। Thank you sir, thank you very much. Now I would like to request ex Maharaji Dr. Mr. Ravi Srivastava ji, CEO of ACE Botanica. Mr. Ravi Srivastava ji, am I audible to you? Mr. Ravi Srivastava, वो जब तक जोड़ते हैं, मैं I would like to call Dr. Naveen from IR class. Dr. Naveen ji. Hi. नवीन जी तो थे यहाँ। Dr. Naveen. Then they will join in the meantime. I would like to request Rajesh Sethiya ji. हाँ, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर रवि श्रीवास्तव जी ज्वाइन कर चुके हैं, मैंने ज्वाइन कराया तो है उनको। हाँ, लेकिन वो सुन नहीं पा रहे हैं या? हाँ वही तो, हमने अभी ज्वाइन कराया। चलिए। डॉक्टर मिस्टर रवि श्रीवास्तव, ex Maharaji and now CEO of AS Botanica. नवीन और वो दोनों ही थे, अभी मैं ज्वाइन करता हूँ। सॉरी सर, नेटवर्क में इशू था। ओके, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू।
हेलो, आवाज आ रही है? Am I audible? Yes, you are audible, sir. Please continue. Maximum 7-8 minutes. Okay, ji. Thank you very much, Pawan sir, and for joining in this very important topic today. ये सेठिया जा रहे हैं क्या? हेलो, नहीं आप बोलिए। जी सेठिया जी, आप बीच में आ रहे हैं, मैं क्या 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 नहीं आप बोलिए ना सर। जी जी जी, तभी मैं ऐसे ही अपने अभी अपने अपने बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि मैं रवि श्रीवास्तव हूँ। आई एम हैविंग मोर देन 30 years of experience in industry. आपकी आवाज नहीं आ रही है रवि जी। Then I joined Tata Energy and CMAP इन सबों से NBRI वगैरह से आप कहीं नेट नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। रवि जी, आई एम सॉरी, it can happen. उनका कनेक्शन डिस्टर्ब है। मैं राजेश सेठिया जी से प्रार्थना करता हूं मध्य प्रदेश की सिचुएशंस पर। प्लीज अनम्यूट राजेश जी। जी, मेरा कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। प्लीज कई जगह इंटरनेट वाली जी बहुत ही दिक्कत है ये, यहाँ पे भी वैसे पानी नहीं पड़ रहा है। तो सेठिया जी बोल रहे हैं क्या? ब्रीफ एक्सटेम्पोर कैन बी देयर। बस मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ बहुत शॉर्ट में। तो मेरा तो ये था, लोगों के काफी हम लोगों के पास नॉलेज है इन सब चीजों का, बट ओनली थिंग इज टू इम्प्लीमेंट डाउन द लाइन टू द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री के भी बारे में अपने को सोचने का है, क्योंकि हम लोग ऑडिट करने जाते हैं गवर्नमेंट की ओर से भी, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि वी आर नॉट इवन फॉलोइंग सो मेनी इंडस्ट्रीज, नॉट ऑल, दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दिस शेड्यूल टी GMP एंड दे आर नॉट फॉलोइंग टू दैट वन। सो उस चीज में मेरा था कि अगर गवर्नमेंट की ओर से इसको स्ट्रेंथन किया जाए तो इट विल बी मच बेटर। दूसरा चीज है कि हम लोगों को पहले, काफी पहले, जैसे लोगों ने इशू रेज किया था कि रॉ मटेरियल हब्स, वी आर नॉट गेटिंग द करेक्ट रॉ मटेरियल हब्स। सो फॉर दैट हम लोगों के पास कुछ एक काफी पहले हमने एक MBTRI का मास्टर टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट में था। आपका ऑडियो फिर कट चुका है। अब मैं रवि श्रीवास्तव जी से थोड़ा वेट करने की प्रार्थना करता हूं, जब नेट ठीक हो जाए। मैं राजेश सेठिया जी और नवीन गर्ग जी से अनुरोध करता हूं। नवीन जी, एम आई ऑडिबल टू यू? नवीन गर्ग है ज्वाइंड। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं नवीन जी को जोड़ दूं। प्लीज अनम्यूट। आप म्यूट है। सेठिया जी अनम्यूट कीजिए।
आपके मोबाइल म्यूट है। हाँ अनम्यूट है। आवाज आ रही है सर? प्लीज कंटिन्यू। आ रही प्लीज, नेट बहुत परेशान कर रहा है आज। नमस्कार साहब, महादेवी अहिल्या की नगरी इंदौर से मैं राजेश सेठिया। हेलो हेलो। कंटिन्यू। हाँ पॉज की कंटिन्यू। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आपकी कट रही है सर इधर भी। सर आ रही है, आप प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। करिए, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है सर। आज का जो विषय है इसके संदर्भ में मुझे यही बात कहना है कि इंडस्ट्री को जब तक जड़ी बूटी या रॉ मटेरियल अच्छा नहीं मिल पाता है, इसीलिए इंडस्ट्री को क्वालिटी के इंश्योरेंस में जाने में बहुत ज्यादा तकलीफें पड़ती है। इस संदर्भ में सबसे बड़ी बात यह है कि पीछे से आने वाली जड़ी बूटियों को हम किस तरह से और कैसे एग्जामिन करें, इसके बारे में भी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारी जड़ी बूटियां अब जो है वो उपलब्ध ही नहीं हो पा रही है। और पिछले वक्ताओं ने जो बात बोली उनसे मैं बहुत अधिक तक सहमत हूं कि जड़ी बूटियों का ना होना हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ साबित होती है। इनकी क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में हमें सबसे बड़ी जो तकलीफ होती है वो यही है कि जड़ी बूटियों को किस तरह से रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, कौन सप्लायर के यहाँ किस तरह से रहती है, उसने कितने समय बाद हमें सप्लाई की, इसके बारे में कोई डाटा या कोई विषय हमें नहीं बताया जाता। मध्य प्रदेश का आयुष निर्माता संघ में डॉक्टर पवन शर्मा जी के साथ ही हमारे डिपार्टमेंट में मिलने गया था। वहां पर हमने एक मांग रखी है और यह शायद पूरे भारत में पहली बार ऐसा होगा कि आयुष निर्माता संघ हमारी अपना खुद का एक कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता है, ताकि वहां पे सारी दवाइयां, सारी ये जड़ी बूटियां बहुत ही तरीके से रखी जा सके, इनका अपग्रेडेशन किया जा सके, ग्रेडेशन किया जा सके और इनको स्टोर किया जा सके। क्योंकि कई जड़ी बूटियां सीजन के पहले आ जाती है और सीजन के बाद वो अवेलेबल नहीं मिल पाती। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह की पहल जो हमने की है कि स्टोरेज हम खुद का बनाएं, ताकि जड़ी बूटियां सबको क्वालिटी मिले। और क्वालिटी जड़ी बूटी मिलने के बाद छोटे छोटे निर्माताओं का सभी तरह से क्वालिटी जड़ी बूटी मिलने का जो सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है वो दूर हो जाता है। और तो पवन जी के साथ मिलकर ही हम लोग अभियान में लगे थे। इस अभियान में हम लोग लगे थे और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस संदर्भ में, हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी यहाँ पर मौजूद हैं, भारत सरकार के प्रतिनिधि मौजूद हैं, हमारे दवा निर्माता लोग मौजूद हैं, हम सब चाहते हैं कि इसी प्रकार के प्रकल्पों को भारत सरकार भी आगे बढ़ाए और सारे निर्माता को इस तरह की सुविधा प्रदान करे। धन्यवाद। पवन जी ने आपने ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी बहुत अच्छा। मैं डॉक्टर नवीन गर्ग जी से अनुरोध करता हूँ। डॉक्टर नवीन जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सभी को प्रणाम, मेरा सादर प्रणाम सभी को। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं जो है 11 बजे हमने ये एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया, उसमें मैं ज्वाइन नहीं हो पाया। अभी जस्ट मैं ज्वाइन हुआ हूँ और मुझे मालूम नहीं है कि क्या क्या डिस्कशंस हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जस्ट जो अभी चैलेंजेस फेस हो रहे हैं इंडस्ट्रीज में और जो जो इश्यूज आ रहे हैं उनके बारे में मैं जो है आपको सभी को अवगत कराना चाहूँगा। क्योंकि मैंने करीबन मोर देन 200 इंडस्ट्रीज को विजिट किया है ऑल ओवर इंडिया में, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लाइनअप नहीं है और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको इम्प्रूव करने का, इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत है। तो मैं जस्ट आपको हाईलाइट करूँगा। तो सबसे पहले है कि जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं उनकी यूनिफॉर्मिटी किसी भी स्टेट में फॉलो नहीं होती है। मतलब हर एक स्टेट की रेगुलेटरी गाइडलाइन का इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग अलग है, मतलब उनका जो इंटरप्रिटेशन है गाइडलाइन का
हर एक स्टेट में जाएंगे तो अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग तरह की DI ड्रग इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स हैं, और अलग अलग तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से उनको समझा जा रहा है। तो गाइडलाइंस जो हैं GMP की, उनको यूनिफॉर्मली फॉलो नहीं होता है हर एक स्टेट में। ये एक सबसे बड़ा इशू हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। तो कंप्लायंस ऑफ GMP जो है वो नॉट यूनिफॉर्म। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में से जो लोग जुड़े हुए हैं कि कम से कम जो GMP की कंप्लायंस है उनका कंफर्मिटी असेसमेंट हो, कि ये कंफर्म किया जाए कि जो ऑल कंप्लायंस है GMP की वो सभी जगह यूनिफॉर्मली फॉलो हो। तो सबसे मेजर गैप यही है। इसके अलावा कुछ गैप्स हैं जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से हैं हर एक स्टेट में, क्योंकि हर एक स्टेट में लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी अपने ढंग से अलग तरीके से इंटरप्रिटेट करता है। जैसे कि फॉर्मेट्स की बात करें, 25D है, 26E1 है, या प्रोडक्ट लाइसेंस है, उनके भी जो फॉर्मेट्स हैं वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ तक कि ये मैंडेटरी किया गया था कि प्रोडक्ट कोड इशू होना चाहिए, प्रोडक्ट लाइसेंस मिलना चाहिए, प्रोडक्ट को स्पेसिफिक कोड मिलना चाहिए, तो वो भी मुश्किल से 1 या 2 स्टेट्स में ही प्रोडक्ट कोड दिया जा रहा है। बाकी सब पुराने ढंग से ही जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चल रहा है। तो जो एक्ट में लिखा हुआ है वो कितना फुलफिलमेंट हो रहा है इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिकली, वो उस पर मॉनिटरिंग मिनिस्ट्री की होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जा रही हैं, मैं ओपन प्लेटफॉर्म में बता भी नहीं सकता कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े जो बिग प्लेयर हैं, वो क्या प्रैक्टिकली कर रहे हैं, उस पर कोई भी कंट्रोल रेगुलेटरी बॉडी का नहीं है। अपने मनमाने ढंग से लोग आयुर्वेद का मिसयूज भी कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, ये फैक्ट है। और मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ वो विद जस्टिफिकेशन, विद एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग असेसमेंट करते हैं आयुष मार्क का, और मोर देन 100 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सर्टिफाइड हैं इस स्कीम के तहत, और करीबन 50% मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जिनका हमने ऑडिट करके ऑडिट नलीफाइड कर दिया। मतलब हमने बोल दिया कि ठीक है, आपको सरकार ने लाइसेंस दिया है लेकिन हम आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। वो उसका मेन रीजन यही है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस वो लोग नहीं कर रहे। तो ये मेजर इश्यूज जो है मैंने हाईलाइट किया है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इशू है विद रेस्पेक्ट टू द पर्सनल आयुर्वेदा एक्सपर्ट। आयुर्वेदा एक्सपर्ट मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज में मैंडेटरी होता है लाइसेंस में, लेकिन जिस आदमी का नाम लाइसेंस में लिखा होता है वो आदमी प्रैक्टिकली वर्किंग में नहीं होता है इंडस्ट्रीज में। उस पर कोई कंट्रोल जो है सरकार का नहीं है। सबके डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, और प्रैक्टिकली जो है नॉन स्किल्ड पर्सन या जिनको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन बना रहे हैं। तो ये भी एक आयुर्वेद का बड़ा दुर्भाग्य है कि कम से कम आयुर्वेदा एक्सपर्ट या आयुष एक्सपर्ट जिसने ये पढ़ाई की है उसका कुछ जो उनका नॉलेज है उसका इनकॉर्पोरेशन प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो कॉम्पिटेंट पर्सनल्स का गैप्स मोस्ट ऑफ 80-70% इंडस्ट्रीज में मिलता ही है, कि जो उसका नाम लाइसेंस में है वो एक्चुअल में वहाँ वर्किंग में होता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। साथ के साथ लेबलिंग कंटेंट में भी बहुत सारे गैप्स, बहुत मेजर गैप्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एक्ट के हिसाब से लिखा है कि आपको यूजफुल पार्ट लिखना है, एब्रीविएशन लिखना है, उसका फॉर्म लिखना है, उसका रेफरेंस लिखना है, बॉटनिकल नेम लिखना है। ये सब चीज़ें लेवल पे आनी चाहिए। वो सब चीज़ें इंडस्ट्रीज काफ़ी जो है 50% से अब इंडस्ट्रीज उस रूल्स को फॉलो नहीं करती है जो लेबलिंग के नॉर्म्स एक्ट में दिए हुए हैं। वहाँ पे भी काफ़ी सारे गैप्स हमने डिटेक्ट किए हैं। और यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि जो अप्रूवल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और अप्रूवल में जो चीज लिखी हुई है, ये आपको रॉ मटेरियल यूज करना है, ये एक्सिपिएंट यूज करना है, ये प्रोसेस यूज करना है, और जब हम प्रैक्टिकली जाके देखते हैं तो वहाँ कुछ अलग ही होता है। ना तो वो रॉ मटेरियल मिलता है, ना वो मेथड मिलता है। स्पेशली प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट में जो मेथड इन्होंने मैन्युफैक्चर ने लाइसेंसिंग अथॉरिटी से अप्रूव करवाया है, वो मेथड ना तो वो फॉलो करते हैं, ना वो मटेरियल फॉलो करते हैं। मटेरियल भी जो अप्रूव किया है रॉ मटेरियल, वो सारे नेचुरल और हर्बल मटेरियल होते हैं जो हमारे बुक्स में लिखे हुए हैं उनका रेफरेंस, और यूज कर रहे हैं वो उनकी जगह केमिकल्स। प्रैक्टिकली वो यूज कर रहे हैं उनका केमिकल, सिंथेटिक डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं, और जबकि अप्रूवल पे उन्होंने उसका रूट ऑफ द पुनर्नवा
स्टेम ऑफ द अर्जुना, ये सब लिखा हुआ है। तो जो अप्रूवल है उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा गैप है। मतलब ये सीधा सीधा कहा है कि प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो फ्यूचर बहुत आयुष इंडस्ट्रीज का बहुत डेंजरस है, क्योंकि आयुर्वेदा को, आयुष को लोग मिसयूज कर रहे हैं, ये फैक्ट है। आप एक बार, जहां तक कि एक और ऑब्जर्वेशन है कि जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो उतना ही ज्यादा वहां पे गैप्स देखने को मिलते हैं, और जितनी छोटी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जिनका छोटा काम है लेकिन उनका काम बहुत अच्छा है, और बड़ी इंडस्ट्रीज में उसी के रेशो में जो है उतना ही इश्यूज हमें देखने को मिले हैं, जिसमें आप एडमिक्सचर बोल दो, सब्स्टिट्यूशन बोल दो, जितने भी स्पूरियस एडल्ट्रेशन बोल दो, ये सब चीजें बहुत कॉमनली देखने को मिली हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। साथ के साथ हम बात करें भस्मों की और रसौषधियों की, उसमें भी बहुत मेजर गैप्स मिले हैं। जो प्रोसेस क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जो मेथड लिखा हुआ है एनालिसिस के, जो क्लासिकल टेस्ट हैं, वो भी पूरी तरीके से एज पर क्लासिकल फॉलो नहीं होते हैं, क्योंकि अभी समय बदल गया है, मॉडर्न चीजें आ गई हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट आ गए हैं, तो उनको यूज करके लोग कर रहे हैं। लेकिन जो क्वालिटी का एश्योरेंस हम बात करें, जिसको क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं, उस लेवल पे खरा उतरना जरूरी है। हम सोचें कि बंग भस्म है, तो बंग भस्म यदि पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं बनेगी तो वो कैसे काम करेगी? जहाँ उसका यूजफुलनेस है वो हार्मफुल हो जाएगा। यदि भस्म पूरी तरीके से नहीं बनी है तो वो फायदे के से ज्यादा नुकसान करेगी, और नुकसान करेगी तो वैसे ही WHO वाले लोग आयुर्वेद को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, भस्मों और इसको रसौषधियों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो पहले ही इस चीज पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और यहाँ के मैन्युफैक्चर जो है इस तरह की माल प्रैक्टिसेस करके और उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। तो और जो है हमारी रसौषधियां और भस्में तो एक तरीके से आगे आने वाले 20-30 साल में लुप्त ही हो जानी है। ये फैक्ट है। जो भी मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट बेस्ड बात कर रहा हूँ, विद एविडेंस बात कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत सीरियस विषय है। यदि आयुष इंडस्ट्रीज को के प्रोडक्ट्स को यदि क्वालिटी वाइज बढ़ाना है तो मिनिस्ट्री का मॉनिटरेशन, मिनिस्ट्री का जो है सुपरविजन बहुत जरूरी है, और कंट्रोलिंग पावर बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग मनमाने ढंग से आयुर्वेदिक दवाइयां बना रहे हैं और मार्केट में जा रही हैं, और एक्सपोर्ट भी लोग कर रहे हैं, लेकिन असलियत उनकी क्या है वो बहुत देखने का विषय है। और मिनिस्ट्री को बने हुए करीब 9 साल हो गए हैं। तो 9 साल में आयुष इंडस्ट्रीज के वैल्यू एडिशन के लिए या क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए क्या पार्टिसिपेशन रहा है, वो भी एक विचारणीय विषय है कि क्योंकि अब मिनिस्ट्री के नाम से हमारा देश पॉपुलर हो रहा है पूरे विश्व में, तो मिनिस्ट्री को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की, आयुष प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, कंट्रोलिंग करना चाहिए, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को मॉनिटरेशन सुपरविजन करना चाहिए, जिससे ऑथेंटिक, सेफ और रिलायबल क्वालिटी की एफिकेशियस ड्रग मार्केट में आ पाए। तो इतना ही सबमिशन है मेरा, बाकी मैं डिटेल में और डीपली इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बताना चाहूँगा। और मेरी रिक्वेस्ट है मिनिस्ट्री से भी, और इस प्लेटफॉर्म जो IRES की प्लेटफॉर्म जो जिसके ये व्याख्यान की सीरीज शुरू हुई है, कि हमें कटिबद्ध जो है आयुष मेडिसिन की गुणवत्ता के लिए काम करना चाहिए, और जो लुप्त होती जा रही हमारी जो देश की परंपराएं हैं उनको जीवित करना चाहिए। इतना ही मैं कह के जो है अपनी वाणी थैंक यू डॉक्टर नवीन, थैंक यू वेरी मच। बहुत सही पॉइंट्स आपने उठाए। निश्चित इनका सॉल्यूशन होना चाहिए। अभी किसी ने चैट में डाला सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो मॉरल है। यदि इंडस्ट्री अपना मॉरल रखे और बाकायदा ड्रग कंट्रोलर उसको एडमिनिस्ट्रेट करे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अब मैं बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं क्वेश्चंस के लिए। वीजी सर, वेलकम। प्रणाम सर, मैं डॉक्टर विरूपाक्ष गुप्ता हूँ सर। सर मेरा प्रश्न सर उपाध्याय सर से है सर। वो ये है सर, हम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, हम जो क्रूशियल एम्स कहते हैं उसमें पहला तो एमई है सर, मैन। उसमें अनफॉर्चुनेटली है जो आयुर्वेदिक ड्रग इंडस्ट्री में कहीं भी यूटिलाइजेशन ऑफ
टेक्निकली नॉलेजियस पर्सन, पर्टिकुलरली रसशास्त्र का है, रसशास्त्र का एमडी को या रसशास्त्र द्रव्य गुण हो, मैन्युफैक्चर में कहीं उसका जरूरत ही नहीं है। कोई प्लेन बीएमएस को ले लिया, वो एक मैन्युफैक्चर सेटअप शुरू कर देते हैं, ये सारा प्रॉब्लम उसी का वजह से हो रहा है। जो टेक्निकली ज्ञान है उनको हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो ये प्रॉब्लम होता है। पहले ये ASU डीटैब में पहले ये डिस्कस करके डिसाइड करना चाहिए कि ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं या फार्मेसी लाइसेंस, जो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में जो एसेंशियल रिक्रूटमेंट है उसमें रसशास्त्र द्रव्य गुण लोगों का योगदान, उनका रिक्वायरमेंट है सर। Actually, we are having lot of supply of Rashastra Draviguna scholars, but industry is not utilizing, even state and central government is also not utilizing them. And मैंने ये एक दो experiences किया हूँ, उसमें क्या है, अब स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटीज होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं। अब नवीन गार्ग सर ने सही से बताया, जो पॉइंट सही पॉइंट है, वहाँ कोई मेडिकल ऑफिसर को बिठा देते। समटाइम्स वो एमडी का भी नहीं होता है, काय चिकित्सक का भी हो सकता है, वो प्लेन बीएमएस हो सकता है, उनको कोई बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है, वो ड्रग लाइसेंसिंग देते रहते हैं। हम ड्रग इंस्पेक्टर या ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो भी है, जो फार्मास्यूटिक्स जानता हो उनको अपॉइंट करना चाहिए सर, नहीं तो वो कैसे फार्मेसी को विजिट करके वो लाइसेंस देगा। अब पहला प्रॉब्लम यही आ रहा है, जो भी हमारा बेसिक प्रॉब्लम है, नॉट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस प्रॉपरली सर। ये मेरा ओपिनियन है। मैं उपाध्याय सर से रिक्वेस्ट करता हूं, आपका अधिकार का समय पे कुछ करे। डीसीसी है हमारे पास, ये ASU ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, उसका बैठक बिठाए, सब स्टेट गवर्नमेंट का लोगों को बुलाए और कुछ करे इस मामले पे। ये तो बहुत एसेंशियल सर, क्योंकि लाइसेंस तो स्टेट गवर्नमेंट देती है, आप समझते हो। मैं रेस्पॉन्ड करूं? हाँ सर प्लीज। मैं पूछना चाहूंगा, ऐसा है, पिछले ASU टैब मीटिंग में ये इश्यू रहा, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में भी कुछ चेंजेस आया था। हाँ सर। सारे चर्चा होने के बाद ये डिसाइड किया गया, क्योंकि हमारा जो स्तर है इंडस्ट्री का, बहुत छोटा छोटा इंडस्ट्री से बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है। हाँ सर। हम MD कंपलसरी बना दिया, फिर उसमें इश्यू ये आते हैं उनका तनख्वाह कितना देंगे। बहुत है सर। MD वालों को, जो क्लर्क को देने वाला तनख्वाह से काम चलाएंगे, ये तो बेइज्जती होगा। इसलिए हमने बेसिक रिक्वायरमेंट ये रखा है। इसका मतलब ये नहीं है MD को उसमें जोड़ना नहीं है बोल के। लेकिन दूसरा, आप जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, कागज में जो आदमी है वो रहते नहीं है, ये सारे इश्यूज आपने पॉइंट आउट किया है, ये फैक्चुअल है, पता है मुझे। लेकिन इसमें अभी फिलहाल जो एग्जिस्टिंग एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल सिर्फ रूल प्रिस्क्रिप्शन है, पॉलिसी मेकिंग है और जनरल गाइडलाइंस का है। अभी जो नया बिल आ रहा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल बढ़ने वाला है। तो जब नया बिल यदि पार्लियामेंट में पेश होगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल। एट प्रेजेंट जो है, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा एक है ASU DCC, जो है स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। दिस ASU DCC could not be notified because it took lot of time, almost 3-4 years, to get nomination from all the states, because existing act says it should be nominated by the state government. So nomination प्रक्रिया में 5 साल रहा, इसलिए ASU DCC जो है ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, वो बिल्कुल बैठ नहीं पाया है, क्योंकि बना ही नहीं है। तो अभी हमने 1-2 स्टेट्स का रह गया था, उसके बावजूद हमने आगे बढ़ा दिया। जो भी स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव ड्रग कंट्रोलर है, SLA है, उन्हीं को हम मान लेंगे बोल के बना के अभी नोटिफाई करने का प्रक्रिया चालू है। जब ASU DCC का मीटिंग होगा, ये सब एजेंडा में ऑलरेडी हमने रखा हुआ है, ये हमारा नोटिस में है। उसका डिसीजन के बाद कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स ले सकते हैं, ये विचार कर सकते हैं। दूसरा जो है, जो ड्रग इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट के लिए
इसके बारे में हम सबसे सारे स्टेट से इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मंगवा रखा है, ऑलमोस्ट सबका इंफॉर्मेशन भी आया हुआ है। हमारा रूल्स में कुछ लूप होल्स है जो छोड़ रखा है, इसका यूज होने से अभी टेक्निकल मैन पावर बहुत सारे इंडस्ट्री नहीं रख रहे पुराना रूल्स को करके बहुत सारे स्टेट्स में। तो इसको टैकल करेंगे, जब आसू डीसीसी का मीटिंग होगा इसमें ये विचार करके एक निर्णय लेंगे, फिर आसू टाइप का पास ये विषय रखेंगे। तो मैन पावर का इश्यू तो मेरे ख्याल से 1 साल के अंतर्गत रिजॉल्व होगा, लेकिन मॉनिटरिंग तभी हो सकता है जब सेंट्रल हैज ए रोल अंडर द एक्ट। एट प्रेजेंट सेंटर का सिर्फ एडवाइजरी रोल है, तो डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इंटरफियर नहीं कर सकते। दूसरा, एक लेबल वगैरह का बात किया था, लेबलिंग में जो भी गड़बड़ है, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिस में कोई भी रूप से, ग्रीवेंस रूप से या कोई कंप्लेंट के रूप से आ जाए तो हम जरूर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा नोटिस में नहीं आएगा तो वो मोटो हम डायरेक्ट एक्शन स्टेट से नहीं ले सकते हैं। ऐसे कुछ बहुत ज्यादा ऐसे इश्यूज हमारे पास नोटिफाई होगा तो उसका ये कंप्लीट कमिटी बना के सारे एक बार एनालाइज करके सारे स्टेट्स का जो लाइसेंस है वो कर सकते हैं। दूसरा, हमारा ये औषधि पोर्टल जो अभी फुल्ली ऑपरेशनलाइज नहीं है, उसमें बहुत सारे हिचस है। जब वो ऑपरेशनलाइज होगा, उसके लिए ऑलरेडी प्रक्रिया चल रहा है। मेरे ख्याल से अभी जो 6 मंथ्स का एक्सटेंशन है, आगे एक्सटेंशन नहीं लेना पड़े, ये मेरा उम्मीद है। उसके अंतर्गत यदि ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, उसके माध्यम से हम ये सब बहुत सारे चीज रेगुलेट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। सर धन्यवाद है सर। सर आप एक पॉइंट सही से बताया कि जो छोटे फार्मेसी है एमडी रसास्त्र एमडी के स्कॉलर्स को अफोर्ड नहीं करते। सर ये छोटा सा if you want to raise any other point, it's okay. Otherwise, so many persons are there. सर खत्म कर देता हूँ सर, पॉइंट में आता हूँ सर। कुछ टर्नओवर के थोड़ा ज्यादा टर्नओवर बड़े फार्मेसी है ना सर, एटलीस्ट उनको रिक्रूट करें, ऐसे हमें कंपल्सरी करना है सर। क्योंकि मैं बीएचयू से एमडी किया हूँ, होने के बाद एक बड़ा फार्मेसी, बहुत बड़ा फार्मेसी साउथ में जो केरल बेस्ड फार्मेसी है, उसमें मैंने अप्लाई किया सर। वो इंटरव्यू में बेसिस यही है कि एमडी रसास्त्र है, वही कंडीशन के मुझे रिक्रूटमेंट नहीं किया सर। सो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अब मुझे कोई बात नहीं। हाँ सर, जब हमारा मैन पावर का कॉम्पिटेंस है, हाँ सर, वो इतना रहे, इंडस्ट्री वो महसूस करे इनका जरूरत हमें है, हाँ सर, तो एक तरह से हमारा कॉम्पिटेंस भी बढ़ाना है, तब जाके इंडस्ट्री को ये महसूस होगा हमें ऐसे मैन पावर चाहिए। अभी ये पोजीशन नहीं है, हम एमडी जरूर लिया हुआ है, इंडस्ट्री एक्सपोजर उतना नहीं है हमारा जो स्कॉलर्स के लिए, उसके वजह से भी ये एक इश्यू बनता है। बाकी वो तनख्वाह जो देना है वो भी एक इश्यू बनता है। मेरे हिसाब से हम अपना कॉम्पिटेंस बढ़ा दिया तो फिर अपने आप डिमांड भी बढ़ जाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। मैं ये जानता हूं सर कौस्तुभ जी, मैं जब एमडी जामनगर से किया तब हिमानी एक बहुत छोटी कंपनी थी, 70 टर्नओवर, लेकिन दे अपॉइंटेड मी एंड माय वाइफ, बोथ वर एमडी फ्रॉम जामनगर इन 80, और सब कुछ हो गया। तो बड़ी कंपनियां मॉरल एंड में मॉरल है, कोई मॉरल फॉलो करे उसको करना चाहिए। डेफिनेटली ये सुझाव बहुत ही उचित है। हिमांशु आप कुछ बोलेंगे? हिमांशु तिवारी, प्रेसिडेंट आयुर्वेदा। सभी को नमस्कार। हिमांशु सर को, चौधरी सर को, सिंह सर को। सर सभी ने अपने अपने सलाह, अपने अपने विचार व्यक्त किए। कौस्तुभ सर ने बहुत अच्छा बताया, सिंह सर ने भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस राइज किए, और जहां तक एज अ ऑडिटर डॉक्टर नवीन ने अपनी जो पॉइंट्स राइज किए, ये कुछ हद तक ठीक है, पर सभी को एक ही तराजू में ना ताला जाए। सभी फार्मेसीज चल रही हैं, और जैसे कौस्तुभ सर ने कहा कि स्टेट लेवल पे उनको जो भी लाइसेंस दिया जाता है, मॉनिटरिंग है, वो स्टेट लेवल पे करता है, सेंट्रल लेवल पे नहीं करता है। बट
जहां तक आयुष स्टैंडर्ड मार्क और पेय मार्क की बात कर रहे हैं डॉक्टर रवीन, तो उसमें यही एक डिफरेंशिएशन रह जाता है कि दीज आर द वॉलंटरी सर्टिफिकेशन, दोज वांट टू टेक दे कैन टेक, जिसको नहीं लेना है नहीं ले। सेकेंडली, जहां तक ठीक है ऑडिट होता है, कोई भी होता है, तो आपकी जो इंटरनल सिस्टम है, एसओपीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हैं, उन सबको अपडेशन हो जाता है और एक तरह से लोग जागरूक हो जाते हैं उस कार्य को करने के लिए कि हमें प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना है और ढंग से करना है। पर दिक्कतें कुछ और भी आती है। प्रैक्टिकली हम देखें तो वो डिस्कशन हो चुका है, मैं उस चीजों को दोबारा नहीं बोलूंगा। रॉ मटेरियल से लेके एक्सट्रैक्ट की बात आ गई, कुछ केमिकल्स की बात आ गई, तो ये प्रॉब्लम्स तो सभी लोग फेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सॉल्यूशन इनका निकलना है। और मेंबर ऑफ द फार्मा और उनको इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा समय लगेगा, एकदम नहीं हो पाएगा। और वन नेशन वन हब की जो बात चल रही है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इट विल टेक सम टाइम फॉर दैट, बट वो आगे जाके बहुत ही अच्छी चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कहीं पर भी नेशनली और इंटरनेशनल लेवल पे भी जहां हमें प्रेजेंट करना है कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा इतना ही कहना है कि चीजें को थोड़ा जब हम जागरूक हो रहे हैं, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम। भारत बहुत बड़ा है और कई चीजों को करने में समय लगता है, एक डाटा इकट्ठा करना, सिस्टम को रखना, कई चीजों पे। पर जो भी हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बी पॉजिटिव, वी विल बी इन वन वेवलेंथ और हम अच्छा करेंगे सभी आयुष इंडस्ट्री की मैं बात करूँ। धन्यवाद। थैंक यू हिमांशु जी। इसमें मैं कौस्तुभ जी से प्रार्थना करता हूँ कि यदि हमारी सोसाइटी जिससे इतने लोग जुड़े हैं, 4000 तो स्पीकर जुड़े हैं, डिग्निटरी, और हम एसोसिएशन से सबसे जुड़े हुए हैं, मैं भी खुद वाइस प्रेसिडेंट हूँ एडवाई का, तो मैं चाहता हूँ कि यदि उन्हें हमारी सोसाइटी के कुछ भी सपोर्ट की जरूरत हो, हम स्टेट वाइज वेबिनार करने के लिए राजी हैं, जिससे अवेयरनेस भी जाए, ड्रग कंट्रोलर्स भी इन्वॉल्व हों और मिनिस्ट्री हमें ब्लेस करे, तो हम पूरी ऑर्गेनाइज करेंगे, मिनिस्ट्री को तकलीफ नहीं देंगे, नंबर 1। और नंबर 2, हमारी सोसाइटी इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए जीएमपी, जीएक्सपी, जीएलपी, जीएसपी, जीएपी, इन सब पे एक ट्रेनिंग कोर्स ऑनलाइन शुरू करने जा रही है। उसमें भी हमें मिनिस्ट्री का आशीर्वाद जरूरी है कि सबको ट्रेनिंग हम दे सकें। एक्सपर्ट्स हम पे हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हमारा है, हम इंडस्ट्री वो मिनिस्ट्री को तकलीफ कुछ नहीं देंगे, लेकिन हमें बस आशीर्वचन मिलता रहे कौस्तुभ जी की ओर से, तो हम दौड़ के आगे बढ़ जाए और जितनी है हमारी उतनी this for myself for dedicated promotion of Ayurveda. कौस्तुभ सर। ऐसा है, all the organizations, A to Z, whatever, they are always free to approach the government for resolving the issues of the concerned stakeholders. So there is no limitation, or there is no nobody is preventing anybody to represent the government. So हमारी तरफ, मैं अभी 1 साल से इस पद पर हूँ, आपकी तरफ से कभी भी एक रिप्रेजेंटेशन मेरे पास अभी तक आया नहीं है। जो भी रिप्रेजेंटेशन दिया है उसका लॉजिकल कंक्लूजन में हम ले जा रहे हैं। मेरा ये एक ऑब्जर्वेशन है, आप उसका अन्यथा मत लेना। हमारा इंडस्ट्री हो, स्टेक होल्डर्स हो या पूरा फील्ड हो, हम लोग बहुत सारे वेबिनार्स करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उसका अंत क्या होगा? It has to come into the implementation aspect. Implementation तब होगा, इसको लॉजिकली पिन पॉइंटेड वे में क्या होना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, ये सुझाव गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए, गवर्नमेंट के पास आ जाए, गवर्नमेंट उस पर विचार करके नेक्स्ट स्टेप ले ले, तब जाके वो रिजोल्यूशन होगा। अभी क्या हो रहा है, चर्चा चल रहा है, क्या चल रहा है हमें पता नहीं है, और चर्चा इतना उलझ जाता है, 2 घंटे में बहुत सारे इश्यूज छेड़ लेते हैं, कोई भी इश्यू का कंक्लूजन नहीं हो पाता है। मेरा सुझाव ये है, जो भी है एक मिनिमम इश्यू, एक इश्यू, सिंगल इश्यू को लेके उसका ढंग से सभी का अभिप्राय आप जब वेबिनार करते हैं उसका संग्रह करके आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दीजिए। हम ये सब विचार किया है, ये कारण है, ये जस्टिफिकेशन है, इसके वजह से हम इसमें ये बदलाव चाहते हैं। तो उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज पर विचार करके हम रिजोल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे सारे इश्यूज को 1 by 1 टेकअप कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें फोकस होना है, उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करें, जस्टिफिकेशन के साथ ब्रीफली करें, और
उसी पॉइंट को टच करें जिसमें इमीडिएट रिजल्ट। सारे चीज एक में जोड़ने से कोई भी चीज का निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि वो अलग अलग अथॉरिटीज को करना होता है, सबके पास हम लोग भेज देते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं करते हैं। इसके लिए जैसे अभी मैन पावर का इश्यू आया, एक स्पेसिफिक इश्यू आप लोग जो भी चर्चा हुआ है उसका नोट करके वो भेज दीजिए सुझाव, उसको हम चर्चा करके आसू डीसीसी आसू डी टैब में करके उसको हल निकाल सकते हैं। बाकी जो सब्स्टिट्यूट्स वगैरह इश्यू है या रॉ मटेरियल का जो रेगुलेशन का इश्यू है, इसमें इंडस्ट्री का सपोर्ट मिले तो मेरा तथ्य है। अभी हम नया बिल में भी रॉ मटेरियल रेगुलेशन के लिए प्रस्ताव रखा हुआ है, वो देखना है अंतिम रूप में क्या बाहर निकलेगा। लेकिन यदि रेगुलेशन का प्रावधान एक्सेप्ट हो गया, उसमें हम सक्सेसफुल हो जाए, फिर जो भी अब आज समस्या किया चर्चा किया है उसका निष्कर्ष निकलने का प्रावधान है। अभी तो हमारे पास कोई भी पावर नहीं है एक्ट के अंतर्गत जिससे हम रॉ मटेरियल को डायरेक्टली टच करें। वो जो भी है इनफॉर्मल पावर्स है, फॉर्मल पावर्स नहीं है। तो इसका रेगुलेशन के लिए फॉर्मल पावर आ गया तो फिर हम उसमें कुछ एक्शनेबल पॉइंट सोच सकते हैं। बहुत खूब सर, बहुत सही। मैं अब विश्व आयुर्वेद परिषद के कर्णधार पूरे संरक्षक सुरेंद्र चौधरी जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी। नमस्कार, धन्यवाद नमस्कार। पवन जी। और आज मौका है, चूंकि आदरणीय कौस्तुभ जी भी यहाँ पर हैं, इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि वेबिनार 500 कर लें या 1000 कर लें, उसका जब तक हम कोई कंसाइज एक मोटो गवर्नमेंट को नहीं भेजेंगे, गवर्नमेंट को पता नहीं लगेगा। लेकिन मैं कौस्तुभ जी को रिमाइंड करा रहा हूं कि मैंने जरूर आपको एक प्रस्ताव भेजा हुआ है और आपने उसको एक्नॉलेज भी किया है। उसका एक पार्ट आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जो सबसे जरूरी चीज है वो है लाइसेंस नंबर यूनिफॉर्मिटी। पूरे देश में अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीके से लाइसेंसिंग लिखने के लिए अलाउ कर रहे हैं। यूपी में ए लिखा जाता है या यू लिखा जाता है। उसका रीजन था कि जब डिपार्टमेंट आयुर्वेद और यूनानी एक था तो आयुर्वेद की जितनी भी फार्मेसी थी उनको ए लिखा जाता था, उसके आगे उसका नंबर और स्लैश करके उसका ईयर ऑफ रिकमेंडेशन या रिन्यूअल। अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में वो 25D लिखते हैं, कहीं AIUHR, कहीं AIUTS। मैंने कोई भी कस्टमर को कंफ्यूजन के लिए ये काफी है। तो मेरा एक निवेदन है, चूंकि ये नेशनल लेवल का विषय है, तो जब भी अपनी टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग बैठती है तो इस विषय को उठाया जाए तो उचित रहेगा। दूसरा विषय है, हालांकि ये मैं जानता हूं कि स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का और ड्रग पॉलिसी डिपार्टमेंट का कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ सामान्य विषय हैं। यहाँ जितने भी फार्मेसी वाले लोग बैठे हुए हैं वो फील कर रहे होंगे कि जब बंडल ऑफ बंचेस ऑफ फॉर्मुलेशन हम स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो वहां से कुछ अप्रूव हो जाते हैं और कुछ पर ऑब्जेक्शंस लग जाते हैं। जब हम कोई सबमिट कर, मैं भी एक रेगुलेटरी सिस्टम का हिस्सा रहा हूं, इसलिए मैं ये सारी चीजें ज्यादा अच्छे से उनकी परेशानी को समझ सकता हूं। तो वहां से ऑब्जेक्शन लग के ये नहीं आता कि ऑब्जेक्शन किस बात का लगा है। यहाँ जब ये मांगा जा रहा है कि प्रूफ ऑफ एफिकेसी एंड प्रूफ ऑफ सेफ्टी हम दे रहे हैं साथ में, तो अगर मेरा फॉर्मुलेशन डिक्लाइन किया गया है तो रीजनिंग के साथ आना चाहिए। अभी एक दो जगह ये चीजें आ रही हैं कि 2 क्लासिकल फॉर्मुलेशंस को आप एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन में कुछ हर्ब्स और एक क्लासिकल मेडिसिन को आप यूज नहीं कर सकते। ऐसे से भी कई राज्यों में डिक्लाइन हुए हैं अप्रूवल को। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं कि जो इंडस्ट्री को भी दिक्कत कर रहे हैं, ओवरऑल ऑल ओवर आयुर्वेद के प्रोपोगेशन में भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। एक विषय उठाया गया था कि टेक्निकल ऑफिसर के लिए MD रसशास्त्र आवश्यक होना चाहिए। यहाँ मेरा एक बहुत छोटा सा, बहुत एक तरीके से जैसे अज्ञानी लोग समझते हैं बातों को, मिनिस्ट्री ने या ड्रग एक्ट ने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा है। कौन रोक रहा है आपको? आप 4 रखिए, 5 रखिए, 8 रखिए, 10 रखिए, MD रखिए, PhD रखिए। और दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है
कि देयर आर फ्यू प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, रेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में किस स्टैंडर्ड के एमडी निकल रहे हैं, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए एमडी के रूप में नहीं रखेगा किसी को, वो कितना एक्सपर्ट है उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, उस लिए रखेगा। यहाँ यूपी में बहुत सारे क्लासिकल फॉर्मुलेशंस बनाने वाले लोग हैं, उनके यहाँ आप जाकर देखिए, पुट लगाने के लिए एक परंपरागत फैमिली के लोग ही आ रहे हैं। और हमने कई जगह जाकर पूछा कि इसके बाद क्या होगा, तो उन्होंने कई ने कहा कि हम ये बंद कर देंगे क्योंकि हमारे पास में एक्सपर्ट्स की कमी है। तो ये विषय बहुत जेन्युइनली और एक लॉजिकल इश्यू पर हमें रखना चाहिए। आप रखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एमडी रखिए, पीएचडी रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, लेकिन मिनिमम के लिए अगर एक बीएमएस रखा गया है तो मुझे लगता है कि उस पर छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लेकिन एक सर मेरा एक क्वेश्चन है कि कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि बीएमएस होना जरूरी नहीं है, मतलब बी फार्मा या बीएससी टेक्निकल पर्सन होंगे दोनों तो भी काम चल जाएगा, बीएमएस होना भी जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ एक स्टेट्स ने रखा है। अब एक्ट में क्या प्रावधान है क्लियरली कि एक बीएमएस होना जरूरी है या 2 होना चाहिए, या बीएससी या बी फार्म से भी काम चल जाएगा? देखिए, अगर आप जीएमपी के साथ इंटीग्रेट चुके हो गया है अब सिस्टम, तो अगर आपका, जैसे कौस्तुभ जी ने भी बताया है कि आयुष सर्टिफाइड लेबोरेटरी के साथ में क्वालिटी एश्योरेंस का अगर आपका टाई अप नहीं है, तो आपको 2 बीएमएस रखने हैं और 2 रखने हैं एनालिस्ट। खाली एक से भी काम नहीं चलता है। लेकिन कुछ स्टेट्स में सर बीएमएस को रखना मैंडेटरी नहीं है, बीएससी और बीफार्म से भी काम चल सकता है। इस विषय को मैं टच किया है ऑलरेडी। कौस्तुभ जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी कौस्तुभ जी प्लीज। इस विषय को मैंने ऑलरेडी टच किया हुआ है। हमारा जो रूल्स में एक पुराना प्रोविजन का एक्सटेंशन भी दे रखा है, इसके वजह से ये हो रहा है। उसका हम अभी आसू डीसीसी का कमिंग मीटिंग में रख रहे हैं, तो उसके बाद चर्चा होने के बाद इसको फाइनल करेंगे। जो भी प्रावधान है वो इससे बचने के लिए जो आई कंसर्न सिस्टम का मैन पावर चाहिए, इसके बचने का एक एक्सेप्शन प्रावधान अभी मेरा नोटिस में आया, क्योंकि मुझे रिप्रेजेंटेशन आया था किसी से, गुजरात और महाराष्ट्र में ये आयुर्वेद का लोग नहीं रहे ऐसे बोल के रिप्रेजेंटेशन आया था। फिर हमने सबसे एंगेज्ड मैन पावर का डिटेल्स भी मंगवाया, फिर हमने रूल्स को क्रॉस चेक किया है, उसमें एक लूप होल बचा हुआ है, तो वो लूप होल बंद करने के बाद ये ठीक होगा। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, शायद अभी 6 महीने से 1 साल लगेगा, क्योंकि वो प्रोसेस हमें अडॉप्ट करना है। आसू डीसीसी का कमिंग मीटिंग में रखेगा, पहले नोटिफिकेशन होने के लिए ही बहुत समय लग रहा है, क्योंकि जो प्रोसेस है ना इसका बहुत लंबा है। जैसे नॉमिनेशन हो, उसका गैजेट नोटिफिकेशन हो, फिर सारे को सर्कुलर हो, इसके लिए 4-5 साल निकल गया। फिर आगे हम एक्शन क्या लेंगे, ये बहुत सीरियस मैटर है। इसलिए हमने अभी सरकार को ये सुझाव दिया हुआ है, नया बिल में वो शायद जुड़ जाएगा। इसमें ये जो प्रक्रिया है नॉमिनेशन का खत्म करके जो भी एंगेज्ड मैन पावर है स्टेट से, वही रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, बल्कि जनरल एक चेंजेस करने जा रहे हैं। यदि वो एक्सेप्ट हो गया तो ये जो प्रक्रिया में जो डिले होता है वो अवॉइड कर सकते हैं और हम डिसीजन मेकिंग फास्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत ही अच्छा बताया। मैं तो ये कहता हूँ, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने यहाँ पार्टिसिपेंट एक्टिवली हैं, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए, एक कंबाइंड नोट बना के सभी एसोसिएशन के साथ में हम सर को देते हैं और फिर आगे हम वार्ता उसके ऊपर करेंगे। बहुत सही नवीन जी, जो आपने ये विषय उठाया है वो जिसमें बीएमएस भी नहीं रख रहे हैं कि कुछ स्टेट, तो मुझे अच्छे से ध्यान है, जो इनिशियल रिक्वायरमेंट थी टेक्निकल निर्माण वैद्य की, तो उसमें आयुर्वेदाचार्य ऑब्लिक 2 वर्ष का किसी अच्छी निर्माणशाला में अनुभव, ये वर्ड लिखा हुआ है उसमें। तो उस आधार पर कुछ लोग जो हैं वो उसको ले रहे हैं, ये आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, उसका जिसमें वेस्ट बंगाल और हरियाणा और वेस्ट कौस्तुभ जी बंगाल में देखा गया है कि वहाँ पे बीएमएस होता ही नहीं है, ना तो लाइसेंस में बीएमएस होता है, ना वो प्रैक्टिकली बीएमएस होता है। तो एटलीस्ट आयुर्वेद का कुछ अंश तो इंडस्ट्री में रहना चाहिए। ये तो जरूर रेक्टिफाई हो जाएगा, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये काम आगे बढ़ा चुका है।
अब हमारा प्रेयर ये है, जब आप रिप्रेजेंटेशन देंगे सारे विषय को इकट्ठा कंबाइन नहीं करना, फोकस रखे एक एक विषय पर, जो भी है जो कंसर्न विषय उसी इश्यू को अलग अलग से दे दीजिए, उस पर एक्शन होता जाएगा इन दी रूटीन प्रोसेस में। ये तो मैं इंश्योर करूंगा जो भी हमारे पास जो पॉसिबल है करने को लायक है, ज्यादा झंझट नहीं है, वो तो हम आसानी से निपटा रहे हैं, हम सभी को लॉजिकल कंक्लूजन में ले आ रहे हैं। ये तो जो भी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है मेंबर्स, उनको भी ऑलरेडी समझ में आ गया है, हम पॉजिटिवली रेस्पॉन्स करेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन सारे जरूर जोड़ना नहीं एक साथ, फिर फोकस हट जाएगा, हम एक्शन नहीं ले पाते। इसका अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप रिप्रेजेंटेटिव इश्यू बेस्ड एक एक करके भेज दीजिए, उस पर हम एक्शन लेते रहेंगे। थैंक यू। बहुत सही कहा हिमांशु जी, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हम एक पॉइंट के इशू पे कम से कम 8-10 अलग-अलग अपने सबमिशन दें, तो डेफिनेटली अलग-अलग उसका क्वेश्चन को सॉल्यूशन होगा, ये मैं भी मानता हूँ। राधेशान जी हाथ उठा रहे थे। राधेशान जी, am I pronouncing right? Ratheeshan? Hello. Yes. Can you hear me, sir? Yes. Yeah, it is Rajesh. You're right, sir. Please introduce yourself. Okay, thank you. I'm a small-scale manufacturer of Ayurvedic medicines here in Kerala. Welcome. Yeah, my question is regarding the small-scale sector. I mean, the small industries. The regulations are so strict. We need 3 people, 4 people, technical people, and all. I mean, is it applicable also for the small players? Say, for a small manufacturer, it would be very difficult to employ 3 technical staff. Is there any consideration for that? Of course, I understand the quality regulations are required, but at least technical staff, is anything possible? Some leniency possible? Thank you. Actually, I have already told in the my presentation that those small scale industries who cannot have their own quality assurance lab, they can use the state details. तो वो तो एक्सेप्शन है ही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में ये टेक्निकल बंदा रखना है, ये तो मस्ट है। वो बेसिक मिनिमम है, वो भी नहीं रखना हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का अधिकार नहीं है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक Thank you, sir. Thank you. बिल्कुल सही कहा सर। हर एक एक्टिविटीज जो है दैट शुड बी परफॉर्म बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन। यूरोप में क्या है कि बहुत सी कंट्रीज में सर ऐसा होता है कि फार्मा को ज्यादा तरजीह देते हैं बनस्पत की डॉक्टर्स या पीएचडी को। मेन ये है कि जो भी एक्टिविटीज कोर एक्टिविटीज हैं दैट मस्ट बी परफॉर्म बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन, और कॉम्पिटेंसी का ऑलरेडी डिफाइंड है, तो छोटी हो या बड़ी हो, एफिकेसी और सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए उस चीज के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन होना आवश्यक है। ये मेरा सुझाव है, इसलिए उसका होना जरूरी है। पवन जी, अगर आप आज्ञा करें, 1 ही मिनट का वो है, क्योंकि आज काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स जुड़े हैं और अभी किसी ने लेबल प्रिंटिंग पर भी क्वेश्चन उठाया, सर नीरज जी ने उठाया, किसने उठाया है? नवीन जी ने। मेरा अपना अनुभव ये है कि मैं जितने भी एक्सपोज में जाता हूं, मैं और कुछ देखता ही नहीं हूं सिवाय लेबल के। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स एज एविडेंसेस। 200% वायलेशन हो रहा है, 200%। और वो कौन कर रहा है? उसको सरकार थोड़ा ही रोकेगी, क्योंकि वो कोई बाहर का आदमी नहीं कर रहा है, वो हम लोग ही कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो स्वयं कर रहे हैं उस चीज को। तो ये तो मुझे लगता है एक सेल्फ रेगुलेटरी एक ड्राइव होना चाहिए among all the major or the small or the medium manufacturers. There are certain things which are doing without any knowledge, in ignorance, and some they are doing as arrogance. तो ये 2 शब्दों में सब कुछ निहित है, और ये बहुत तो बड़े बोल्ड क्लेम कर देता है सर, 0 ब्लॉक। अब 0 ब्लॉक में अभी तक मॉडर्न नहीं कर पाया 0 ब्लॉक विदाउट स्टंट या विदाउट कोच, लेकिन आयुर्वेद का सिरप 0 ब्लॉक कर सकता है। ये अपने यहाँ मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी है। ये तो सबसे सर बड़ी उसी के लिए सुनिए सर, अब मैं कौस्तुभ जी की पक्ष ले रहा हूँ। इसके खिलाफ कौन गया कोर्ट में? मैन्युफैक्चरर्स। कोई नहीं गया। मैन्युफैक्चरर्स गए हैं सर,
गए कैसे नहीं है? 170 स्टे हुआ है और अभी हाईकोर्ट का डिसीजन आया है उस पर, मिनिस्ट्री को उन्होंने रिकमेंडेशंस भेजी हैं। तो ये सारी चीजें बताएं ना, सेल्फ रेगुलेटरी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सब समझदार हैं, सेल्फ रेगुलेटरी होनी चाहिए, कितना विज्ञापन करना है, किस चीज का करना है, तभी जाकर हम जो अनऑथराइज्ड एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसको इंडस्ट्री रोक पाएगी। और अगर हम भी उसी लाइन में चलेंगे तो हमें कोई सीरियसली नहीं लेगा। Sir, we are facing one problem, label provision. Sir, I am audible, sir? I am audible? Yes, sir. Yes, yes. Sir, Kousthubha ji, basically mainly problem. Suppose the label provision we are putting indication. The indication suppose is a Rakta Prasad. So this Rakta Prasad definitely it is effective for the dysmenorrhea, amenorrhea cases. So wrongly anybody is mentioned that any indication is wrongly in the label. The modern inspectors, not an Ayurvedic inspector, including Ayurvedic modern inspectors, take the cases, frame the cases, and huge problems are created. Main reason that the inspectors are the target. The target means they want to at least number of the cases they want to register. So the small petty cases are taking too much of the problem. Problem not only the industry, the AYUSH inspectors also. All the AYUSH inspectors they spend more time, these petty cases times also. So that also can consider, at least you give me a one time for knowledge, because the small players doesn't know this type of the more regulation. So you give some education first time, then you go to proceed the case. Then what happened? They want to the cases for the number of the cases registered. They took immediately go to the shop and take it the product and mention that send the notice. So this is a very critical problem faced over all over India, sir. So can you give my suggestion that you can implement it, no problem. At least you give the suggestion first time a warning. Warning means you can inform this is wrong, so you change that. So automatically the understanding healthy business will start. That is my humble request, sir. Can you consider this matter, sir? I hope legal procedure requires state regulators to issue notice and seek the response of the manufacturers for any issue of violation. So it is a legal procedure, due legal procedure only, and there should not be any case where they can directly suo moto issue an action, introduce an action. So first they will issue. Sir, directly they are going to suo moto. Directly they put to the court. That is a basic violation of the law, in my understanding. You can question if they have not issued the notice and given you opportunity to respond. It's a basic violation of law. NSQ and all, it is a different issue. There also the procedure requires they will issue the show cause notice and then only initiate the procedure. Only thing they can stop the distribution of medicine immediately for the public safety. Otherwise, for every issue, to take the issue to the logical conclusion, one has to initiate the process of issuing show cause, giving the opportunity for the other party to respond. So that is the basic tenets of the law, and which cannot be violated by anyone. If that is there, your association can take it up directly, or you can represent to us if any such cases are there. We will issue advisories in this regard. Thank you, sir. Very good suggestion. We will take sir. Thank you, sir. My one humble. Lakshmikant ji wants to say something. Is very senior person. Before that, my humble request is this, sir. Please review Objectionable Remedies Act and Magical Remedies Act, Objectionable Advertisement Act and Magical Remedies Act in purview of Ayurveda. Because there are so many diseases can be treated by Ayurveda. But we are bound of that. Anybody can give us warning on that when we are proving clinical research also. Please. See, this is possible provided you all associations and stakeholders do proper representation logically, and we can see what the solution can be come out. Actually,
as an advisor, when I came to the seat, I only wondered why these things are there in the law and how it can be implemented practically when our science is telling something. But that cannot be taken by one person. If industries and other stakeholders put proper representation, in what way this can be altered? Magic Remedies Act can be altered as per the requirement of the everybody, every stakeholder, not only industry perspective, consumer perspective, and ethics perspective. Every perspective we have to look into, and some solution can be looked into. But we are not getting any representation at all in this regard. Only thing is 170 has been done, and there was a representation on that. Now, actually, ASU tab already taken a decision to finally notify draft notification, that is to withdraw 170. And I don't think it is anyway is restricting authorities to take action under Magic Remedies Act. That is my perception. 170, why it was withdrawn, you people have represented logically, and through logical decision on making only, ASU tab has drawn this conclusion, because there is already existing law which has every provision for enforcement of law. Therefore, this 170 double jurisdiction we just avoided. That's why we are revoking 170. Otherwise, Magic Remedies Act specifically, any amendment is required, any changes is required, demand has to come from the public. Then only from the government side we can initiate some action. Just raising the issue in the seminar will not, we cannot act upon these opinions. No, we will provide you in written, sir, point by point. For that, we will compile our logics and points through webinars and then compile them, then send you. Definitely, it should be there. Sir, one more issue they are facing here. That is, you know that the aswas and arishta is a medicine. And after the GST, there is a manufacturing, manufacturing license is withdrawn from the Excise Department. But in Kerala, most of the state, they are implemented for the sale license, especially for the Excise Department. So I think the court also observed that the High Court, the case is pending. So we are also mentioned that Ayurveda is medicine not under the purview of the excise. But still there is going on, the problems are facing the aswas and arishtas all over the state. So that area, because Ayurveda is a medicine, not an alcohol. So including beverage. So in olden days, they are at least Dashas and Pipilyas they are giving some. If the alcohol percentage is below the 12% limit, I think you can bypass the excise law. And ASU tab, this issue has already was there in the agenda and it was discussed. And if any state-specific issue is there, if you write to the ministry, we'll look into it. Okay, then some states have implemented for the sale license, manufacturing license is withdrawn now. They want only sale license. That is the main problem. All the area, the small players take the license. It is not possible, sir, because maximum 2,000 rupees sale. Only 100 or 200 rupees an aswas and proper representation. If alcohol limit is within the prescribed limit, then there is a possibility of intervention. If it is above the prescribed limit, then there is no possibility of intervention. Okay, that is already mentioned, but the state excise department, the rules are still implemented. That is why we are facing the problem. You represent, sir. We will take action. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. I would like to request Dr. Lakshmikant Dwivedi, sir. Dr. Lakshmikant Dwivedi, sir, has raised hand. सर नमस्कार, मैंने पूरा वेबिनार सुना. मैं तो कहीं मेंबर भी नहीं हूँ, न मैन्युफैक्चरर हूँ. मेरा बोलना तो अच्छा नहीं लगेगा, किंतु फिर भी आप रसशास्त्र के ज्ञाता हैं, सर. सर वो ज्ञाता होना ही कष्टप्रद है. आत्मा में कष्ट होता है. जो बात पवन जी उठाते हैं या चौधरी जी बोलते हैं, उसके बारे में बात करना बड़ा आसान है, किंतु एक उदाहरण दे देने से वो मोक्ष नहीं हो जाता. खाली हींग के लिए हम सोच रहे हैं,
शिलाजीत आपको अच्छा मिल जाता है, गारंटेड स्तर है, मानक है, तो फिर हम दवा बना के बेच रहे हैं। तो जहां विचार कर रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का नाम आया, तो उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? टी बोर्ड से, कॉफी बोर्ड से। तो साहब ऐसे हर प्लांट के लिए आप बोर्ड बनाने का विचार कर सकते हैं, और नहीं तो लेबल पे लैटिन नाम लिखने से वो दवा अंदर है ये प्रूव करना किस कंपनी के या सरकार के बस का है, जरा बता दें। और जो प्रैक्टिस में है वो सभी जानते हैं, मुझे इस मंच पे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। आप देखिए अपने आप में, नाक केसर सब में डालते हैं, लैटिन नाम लिखते हैं, किंतु बाजार में मिलता है आपको उस रेट में जो बाजार में आप ऑफिशियल ड्रग उस रेट में बेच रहे। ऐसे लिस्ट बता दूंगा मैं, किंतु हम द्रव्यगुण वाले इसको भी विचार करें, लेबल पे लिख देने मात्र से प्रोप्राइटरी ड्रग में वो दवा पूरी है, इसकी गारंटी नहीं है, ये आप मान के चलिए, मैं एविडेंस भी दूंगा, और पकड़े भी जाते हैं। किंतु सरकार लिबरल है, मैन्युफैक्चरर के हित में सोचती है, कंज्यूमर के हित में सोचना चाहिए। बस इतना ही कह के मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। बोलना नहीं चाहिए मुझे ऐसे अवसर पे, किंतु आत्मा में कष्ट होता है कई बार कि वास्तव में लेबल पे लिख देने से या उसकी पालना करने से अंदर वो चीज है क्या। धन्यवाद सर। ये आप लोगों का बोलने से ही कुछ चेंजेस आ जाएगा। हम ऑलवेज एक्सपेक्ट करेंगे आप खुल के जो भी इश्यू है वो रखिए सामने। इसके वजह से तो रेगुलेशन है, जो प्रैक्टिस है, क्योंकि प्रीच और प्रैक्टिस, लॉ एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इसका जो गैप है ये इतना वाइड है, जिसको जो हम कम कर सकते हैं तभी हम कुछ चेंजेस ला पाएंगे। वो कम करने का कोशिश में हम लोग जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों का, सारे स्टेक होल्डर्स का अपना अपना दायित्व है। ये गैप एरिया से प्रीच एंड प्रैक्टिस और लॉ एंड एनफोर्समेंट में जो गैप एरिया है उसको फिल करने का। हम ये नहीं सोचे इश्यू एड्रेस करने से बदले किसी को 5,000 पकड़ो अपना काम निकलवाओ। ये सोच जो हमारे दिमाग में बैठे हैं, ये हम जो आसानी का रास्ता चला रहे पिछला 40 साल से, इसके वजह से आज हम इस सिचुएशन में खड़े हैं। यदि हम लोग अपना आत्मावलोकन करेंगे, यदि हम अपना समस्या को ढंग से प्रस्तुत करके गवर्नमेंट के सामने रख के समस्या रख लिया गया हो, तो आज ये चीज इधर डिस्कस करने का जरूरत ही नहीं होता था, क्योंकि हम लॉ को इजिली बाईपास करने का आसान रास्ता समझ रखा है। और हमें ये पता है वो रास्ता ज्यादा सुकर है, क्योंकि उसको लॉजिकल कंक्लूजन के लिए हम आगे बढ़े, गवर्नमेंट के पीछे पड़े। इसके वजह से हम ये सब फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गैप है, जब तक हम प्रतिबद्ध नहीं है सब अपना अपना स्टेक होल्डर्स पे। यदि हम आयुर्वेद के विद्यार्थी हूँ, जो हम पास हो रहे हैं और हमारे नाम का स्तर है, इसी लेवल से हमारा आत्मावलोकन चाहिए, तब जाके हम इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा क्या है, काम निकलवाओ कोई ना कोई तरह से। ये हर स्तर में, विद्यार्थी जी से लेके टीचर हो या मैन्युफैक्चरर हो या डॉक्टर प्रैक्टिशनर हो या पेशेंट हो, इवन पेशेंट इज नॉट वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट ऑल दिस इश्यूज। अभी एक ही दवाई 4 जगह मिल रहा है, एक सस्ता में देगा, वो ये नहीं सोचेगा वो सस्ता दवाई काम करेगा या नहीं करेगा, वो तो सस्ता दवाई पर जाएगा। ये हर लेवल में ये हमारा सोसाइटी, एज ए सोसाइटी ये जिम्मेदारी है। हम लोग आत्मविमर्श सबको करना है, जैसे द्विवेदी सर ने कहा है, मैं मानता हूँ ये बहुत सही कहा है। ये गैप फुलफिल करने में हम सबको योगदान रहे। एज ए सिविक सोसाइटी, टोटल हमारा सोसाइटी को अपना अपना एरिया में ये प्रयत्न करना है। जब हम ये गैप फुलफिल करने का प्रयत्न एज ए सोसाइटी करेंगे, तब जाके बदलाव होगा, नहीं तो सब डिस्कशन में रहेगा, प्रैक्टिकली वही चीज चलता रहेगा। सर, मेरा तो ये कहना है कि जो ऑडिट वाले जाते हैं उनको भी पर्याप्त ज्ञान नहीं होता इस विषय में, और खाली घूम के आते हैं और अपने अनुभव सुना देते हैं। बाकी अंदर से देखो तो कंपनियों की हालत बड़ी पतली है। मतलब एक एक द्रव्य में अगर आप डिसाइड करो और उसके सब साइड चलती, किंतु लेबल पे लैटिन नाम वही लिखेंगे जो फॉर्मूले में है, वो चीज नहीं डाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं। और सैंपल में, रेफरेंस सैंपल में भी हमने वो चीज देखी है जो वहां नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में हमारे जो ऑडिटर्स भी जाते हैं वो भी पहले आत्मज्ञान कर लें कि हमको आयुर्वेद का फॉर्मुलेशंस का नॉलेज कितना है, नहीं तो हम भी घूम के ही आए हैं, वैसी स्थिति हो जाती है। धन्यवाद सर। ठीक है। Upadhyaya, one more issue, sir, regarding the Vijaya, that is cannabis tattva.
Some states are allowed to manufacture the cannabis. सर इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है. ऐसे भी आपको पर्टिकुलर स्टेट आपका भी रिप्रेजेंटेशन आया है, उसमें भी हम चर्चा किया था. तो इसका अभी हम इधर इस प्लेटफॉर्म में ना डिस्कस करके जो भी है आप डायरेक्ट मिनिस्ट्री को लिख सकते हैं या डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं सर. इसको कुछ कर लेंगे. Thank you, sir. Dr. Nishant Gopinath. Dr. Nishant. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Am I audible, sir? Yes, please introduce yourself. I'm Dr. Nishant Gopinath from Nagarjuna Ayurveda, Kerala. Welcome. So, thank you, sir. It was a good session. I just want to ask about one thing is related with the export. And it is regarding the raw materials. Because we have the CITES restriction and okay, the other country-specific restrictions are there for raw materials. So like Kotam is one thing where we have Kotam Chukadi Thailam, there is a demand, but we cannot give it as it is because of these restrictions. So one suggestion is there, previous year, some years back, it was like, if the material is in an inseparable form, then that can be used because the endangered species. But now it is not like that. The ingredient mentioning itself will block the export of those medicines. So can we do something on that area, sir? Because almost all the formulation have one or the other restricted raw materials. Actually, Ramanathan ji has organized one webinar around 1 year back when I just joined the ministry in 1 or 2 months. I remember that. And you may also be part of that webinar. Okay, sir. Already government has made a relaxation in the labeling provision for export drugs. This is the only bypass what is provided now. Other things, as a sector, we have to think whether we can able to sustain this type of multi-ingredient formulations having 30, 40 ingredients with all the red listed drugs, and how long we can able to sustain these exports and how much we can produce in given the sustainability and environmental concerns. So my suggestion to industry as a whole and all the stakeholders of Ayurveda, even including practitioners, see what we are practicing in day to day is only 2% of what is there sold in the classes. There are so many untapped raw materials which are existing freely available, but the formulations are not available in the market. It is there in the text, but nobody is using because it is not available in the market. So even for the P&P and also for the classical industry as a whole, we have to switch over to such a formulations where ingredients are easily abundantly available, which are not so much so far untapped. So this switchover, we should make a conscious effort. It will not only improve the quality, it will be simplify your safety profile and all the other requirements for exports as well as for the domestic laws. Whatever, because if it is free ingredients, your expenditure also comes down and efficacy will improve. And at least you will ensure what is the quality of raw material and what is the quality of the finished product. So this exercise we have to do. At present for export issue, only relaxation in labeling provision and also relaxation for sending the product in appropriate HS code. This advisory also has been issued from the ministry. This much of facilitation we have made at present, but my sincere request to every stakeholder to seriously think there is actually benchmarking is required in this regard. What changes can be done in our day-to-day practice? Always, whether we have to depend on Tribhuvan Kirti or Sanjeevani Uti or simple formulation with 1 or 2 ingredients abundantly available, can it go for Shwasa, Kasa? Single ingredient formulation, very less physicians are using, but they are most effective. And we are not concerning that. Even cost of the medicine will come down, cost of manufacturing will come down, cost of this all the regulatory requirements will come down, and efficacy of product will multiply. So my humble request,
better for another 10 years. We should work out. Every pharmacy, every practitioner, every stakeholder should visualize what changes we can make and what new formulation can be brought from the text only. I'm not asking you to bring some from somewhere else out of your experience. Textbooks gives lot of those single ingredient formulation, 2-ingredient formulation, 3-ingredient formulation, and especially we have to do an exercise. Which are all the raw materials which are not used effectively, which are abundantly available. I always say in every webinar and seminars, wherever interactions come, say, like Aragwada, Nimba, all these are abundantly available everywhere. Karanja. And these are all basic drugs which are mentioned in the classes. But where we are using Damargava, so many things which are easily available, but we are not using. So we have to rethink, start by one item, 2 items, and see how, one based on single her ashwagandha, a unicorn can be started in this country, and it can beat all our entire industry. You can see the potential of single ingredient, isn't it? So similarly, so many options are there. We are not exploring that. That we have to work out and think of that direction. Otherwise, we cannot have sustainable growth of industry and spread of industry across the world. We have to think over switching over to the simple formulations, to the such ingredients which are abundantly available. As already Dwivedi sir has pointed out, we have to think of giving opportunity for the manufacturer to mention what he has actually used. Now our law is stringent. We have fixed one. Nagkesra means this only, which is not available. So if you mention any other name, it will be your drug has to be seized. That's why these things are going on. So we have to think over whether we can allow the manufacturer to mention what raw material he is used. And 2-3 botanical sources for single plant can be suggested or approved. And what will be happen to the rates? Because name will be the same, but cost will vary very much. For example, Ativisha and Musta, they are substitutes allowed in the classics. But whether it is for all the prescription or the indication, or it is only for Atisara. This has to be and if it is Ativisha, what should be the cost? If it is Musta, what should be the cost? These things has to be checked out, and I am very serious in this issue. If all of us will work together in some common direction, we can find out solutions. Thank you, sir. Thank you very much. Ravi ji, if you want to ask any question, I hope only 1 or 2 questions can be taken. Time is more. Ravi, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ठीक कर लीजिए तब तक। और किसी का कोई क्वेश्चन? If anybody would like to ask any question, otherwise we'll conclude the session. आपकी आवाज नहीं आ रही है रवि जी। Sir, regarding that. Yes, welcome, sir. Now, recently, the government of India reduced the tax burden. Most of the modern medicine recently, last meeting. So now our GST 5% for generic products and 12% is a proprietary medicine. Now the raw drugs is day by day is increasing, and availability of the raw drugs is also very much scarcity is there. So, and the demand also, the public demand is also need more. So why the government is requested to the GST, the PP products also 5%. That is already that government on last meeting that the GST department reduced all the 12% to 5% and 0%. We don't want 0%. At least a PP product we can reduce to 5%. It is very much
manage the that is the people, the customers is very useful, sir. Can you consider this matter, sir? Thank you. Authorities, sorry, if larger representation finance comes, department. That's what it comes to AYUSH Ministry, we can forward it to the concerned authorities. We cannot take direct call on this issue. Okay, then the one more issues are pending that our weight and measures 1 gram issue. That is the issues still is pending. That is weight and But I measure. They are think mentioned the AYUSH label is provision. conducting meetings. So you can raise that issue and we'll discuss that issue in that meeting, which is specifically for that legal metrology issue. And if logically issues will be put forward, it can be taken. Otherwise, just a general demands, we cannot able to convince others. So we'll discuss these issues in that meeting. I think it is in 1 or 2 days, no? I don't remember what is the date. Ramanathan ji, you may be aware of the date. Yeah, that is the main problem, sir. That is modern medicine is exempted. No, that is meeting also the date is medicine. nearby, no? In 1 or 2 days it is there. There we will have a detailed discussion on this and we will draw some conclusion there. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. I hope all questions are ended. Rampal Somani ji, Dr. Rampal Somani ji, for conclusion. Dr. Rampal Somani ji. Unfortunately, I hope I am not audible to him. No. So we would like to have conclusion from respected JP Singh ji. Then we will end. JP Singh ji. Please unmute. Unmute. Please unmute. Unmute. Unmute, sir. Yes. Welcome, sir. आप म्यूट है, फिर म्यूट हो गया। हाँ, फिर म्यूट हो गए। एक बार दबाइए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर। दोबारा से फिर दबा दिया इन्होंने। आप फिर म्यूट हो गए सर। एक ही बार दबाइए। हाँ, एक ही बार दबाइए। फिर म्यूट है। हाँ, अब जी, अब ठीक है। मैं स्पीक। हाँ सर। जो आज का ये वीसी मीटिंग आपने जो इतना 487 का जो आपने किया ना, that is most 837 sir, 837. 837. It is most fruitful, and we had a very wide discussion on the matter, right from on all the topics, from GST to meteorology and all that. To Dr. To Advisor Sahab, we have requested already that this government also wants to do each business, and they wanted to eliminate the act and rules which are not legible for us. We have got one rule 61 for the labeling purpose, and this meteorology and commodities act that we should be excluded from that. When 161 was not there, then there was logic. Deputy Singh ji, all these things we will discuss on that day when exclusively meeting has been kept on this issue. We'll discuss, we will have good opportunity to put your points and we will draw some conclusions, and together all your conclusion will be conveyed to the concerned department, concerned ministry, and we will get it.
Sir, my request is this, that the Ayush Ministry should stress upon the Ministry of Meteorology that Ayush industry should be excluded from the purview of the There is not any. We are conveying whatever the concerns of the industry. We are not having any negative opinion on your suggestions. Only thing we have to discuss and draw proper conclusions and proper justification and place it before the concerned ministry. So that is the task before us, and we will not discuss now. We will discuss in the specific meeting. Thank you very much, sir. But again, if any meeting is again, called for this, I would like to have your valuable invitation, sir. Sir, Upadhyaya, can you have a small suggestion, sir? Can you put an arrangement, a meeting with the CCRAs and Ayurveda industry, sir? Because number of the CCRAs industry research centers are there. Suppose you are arranged a campaign, so we are ready to funding also. Sir, this you can So directly write to DG CCRAS, and I hope he will positively respond. And it is very easy thing to do. So please, you represent to DG CCRAS. If you want my interference, I will speak to him. Sir, I already sent the 2 letters. The response is not positive. That is why I request you, sir. Okay, you share it to me through WhatsApp. I will just discuss with Dr. Acharya. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you to all. Again, our request to advisors are because the National Medicinal Plant Board is under the Ministry of Ayush, and they must help us for procuring authenticated raw material by cultivation. That industry is not purchasing, sir. Sorry. NMPV, but industry is not purchasing. Industry is interested to purchase collected material, not cultivated material. That is also hard. It is not the fact. They wanted to purchase the cultivated also, and the cultivation is the only solution if the industry is to increase manifold. So, unless we are not having the planting material, seeding material, and the work which has been done, so it is all under the purview of this ministry. If they can stress the officials there, they do something for the growth of the industry. Minimum. Sir. हम एक-एक वेबिनार करेंगे, एक-एक पॉइंट पर करेंगे और कंक्लूजन Sir, already I have told, new act as a new bill is providing provisions for regulation. If it is accepted, I hope we will together can check out some strategy to make it available, good raw materials, quality raw materials to the industry. And I am of the view that every moment of raw material and finished product will be tracked from the place of collection to finished product. And this will be very serious responsibility to the industry also. So we are highly thankful for your initiatives. And I seek your support for this endeavor. But once the new bill is passed, I think these things are going to change and something concrete will be on the ground. Sir, Kousthubha, my last point is a very relevant point that is I raise here. You know, the present social media, that is a number of the against the Ayurveda. Aswas and Arishas is creating the liver and without any basic support. So what happened, this propaganda, last time, it is very badly affected the students of the admission of the Ayurveda college. Last time, 15 Ayurveda college, they are getting only 30 to 40% of the admission. This is a scenario in Kerala now. So why these people at the social media unnecessarily propaganda one group of the doctors? So we can automatically we can face the issue to the social media, raise the issue. This is a recognized system. This recognized system send a criminal case, file the criminal case against this matter will solve.
So I think the AYUSH department will take some interest in this matter. We have already sent the 2-3 representation issue, but we are facing the big problems regarding our sales and including doctors practice also, including just now I am practicing now, sir. One gentleman asking, they want only external medicine, no need any internal medicine, because they are confused that all the internal medicines are heavy I metals think are there. this is an issue which we cannot discuss in this because I am not authorized to discuss. But my personal opinion in this regard, if we raise every issue from the ministry, they will get unnecessary focus, and their intention is that only. They are not keen to affect you in local level. They want us to respond to that, and that will make more publicity for them, and that will be contrary, they will affect adversely to us. So my sincere request, if you want to discuss that issue, we will have one-to-one discussion because we are representing the entire AYUSH community in Kerala. So we will have one-to-one discussion in some occasion or over phone. And I have better suggestions for you, not as a head of the drug policy section, as an individual doctor in the field. Thank you, sir. Okay, I understand. सर, बहुत अब मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं जेपी सिंह जी से, रामनाथन जी से, सुरेंद्र चौधरी जी से, नवीन जी से। हम एक सीरीज करने जा रहे हैं वेबिनार की, जिसकी बात हो चुकी थी, उसमें एक एक कंक्लूजन करके मेमोरेंडम बना के और हम सर को सबमिट करेंगे, कौस्तुभ जी को, तो जिससे वो बातें आगे बढ़ते, लेकिन टुकड़ों में, कट पीस में। एक साथ हम बहुत सारी प्रॉब्लम है हमेशा लिख के देते आए हैं, उसका कुछ भी नहीं होता है। तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स और एक एक पॉइंट्स का एक एक मेमोरेंडम ये देते हैं, तो एसोसिएशंस का हमें ब्लेसिंग्स है और यहाँ एक्सपर्ट्स भी हैं। रियली बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं आदरणीय कौस्तुभ जी से इस सेशन के बारे में फीडबैक चाहता हूँ। तो हमें क्या करना है, एक्शन की गाइडेंस। सेशन तो अच्छा चल रहा है, मैं ऑलरेडी अपना विचार रख रखा है। ये है, हम लोग बात कम करें, एक्शन ज्यादा करें, और हमारा अपना इंटीग्रिटी मेंटेन करें हर लेवल में। सभी को अपना अपना इंटीग्रिटी अपना अपना काम में लेना है, तब जाके हम सेक्टर को सुधार सकते हैं। इतना ही मेरा निवेदन। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत आभार आपका। आप जुड़े, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और फिर परेशान करेंगे आपको, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन विद लॉजिक्स एंड सॉल्यूशंस, छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप आशीर्वाद देते रहिए, बस हमारे लिए इतना काफी। मेरा एक निवेदन है, हर चर्चा में मेरा उपस्थित होना जरूरी नहीं होता है। आप आपस में चर्चा करिए, जो भी लॉजिकल कंक्लूजन है हमारे पास आए, उसमें कई मतभेद हो, मैं खुद आपको कांटेक्ट करूंगा, फिर जरूरत हो तो फिर चर्चा रखेंगे, क्योंकि इतना समय हम नहीं दे पाते हैं। अभी मैं आधा 10 मिनट के लिए मैं अग्री किया था अब 2-3 घंटा चला, ये हर बार चलता है, ये एक्सपेक्टेड है। इसलिए मैं ये निवेदन करता हूँ, आप मुझे हर सेमिनार वेबिनार में मत बुलाइए, आप अपना जो भी है विचार हमारे पास रखिए, उसमें कहीं हमारा मतभेद हो हम इंडिविजुअली कंसल्ट करेंगे, फिर इंडस्ट्री कंसल्टेशन जरूरी हो तो हम उसको भी बुलाएंगे, ऑफिशियली चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा, यही आशीर्वाद आपसे चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। The drugs department is working to 24/7. AYUSH department, drugs policy department, you send it any representation, you will get in within 3-4 days a reply. That is the beauty now for the drugs department, policy department, sir. Thank you, sir, for your sincere work. Thank you all. Thank you. Have a good day. Thank you very much for joining.